Good afternoon. So this is a marathon session. As you know, we will have three sections primarily. One would be English, then we would have legal reasoning, and we would also have current affairs. So current affairs, legal reasoning और English ये तीनों करने वाले. And in the English section, we are going to face some very interesting questions, and they would cover all kind of exams. Okay, so बहुत मजा आने वाला है. And I hope all of you have prepared for Diwali also. Of course, minus the crackers, and you have helped your family clean the house also, right? घर वर साफ कर लिया सबने? Let me know in the chat box, everybody. All right, audible, visible. Aman is starting with the question, how long will this session go? Aman, it depends on you. You can leave any moment you want, but this session will go on for a reasonably long time. Okay, so we welcome here everybody who is patient and is eager to learn and not starting session by asking these kind of avoidable questions. Good afternoon, everybody. Good afternoon. So I can see plenty of you here. So good to see you all. Can I see anybody new? Yes, a lot of you guys appear new. First time नाम दिख रहा है काफी लोगों का. All right, so I think we can start now, right? Okay, so I'll repeat. We are going to do three sections as of now: legal reasoning, current affairs और English. ये तीनों करने वाले हैं आज. तो देखते हैं किसमें कितना है दम, right? Now remember, take all the questions seriously. More importantly, look at the responses of others. खुद तो करना ही है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दो कि बाकी कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं एंड आपकी तैयारी कितनी है. ओके, नाउ रिमेंबर, प्लीज डू नॉट आस्क मी द क्वेश्चन दैट इज जनरली वेरी वेरी ऑफन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, विल दिस बी आस्क्ड इन क्लैट? ओके, ये सवाल पूछने वालों को स्पेशल अवार्ड मिलेगा. क्या ये क्वेश्चन क्लैट में आएगा? राइट, आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. तो प्लीज ये मत पूछना, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं, फिर उनको स्पेशल अवार्ड देना पड़ता है ना. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. शुरू करें? ओके, चलो काफी लोग आ गए. लेट्स स्टार्ट नाउ. So before I move on, two things I need to very clearly tell you. A, if you have not joined our test series yet, I don't know what you're waiting for. Please start straight away. जल्दी से ऐप से डाउनलोड करके, आप ऐप डाउनलोड करके you can join us. 45 plus mocks है इसके अंदर and 9,000 plus questions prepared by the experts in the field. So don't miss this. And second thing, from 21st we have started our All India Mega Mock CLAT for 23 second or the second free mock, and it is being taken by students across India. तो ये वाला मिस मत करना. 21st से 31st तक ये on रहेगा. You can take it anytime you want. But remember guys, in the last mock we saw this, so let me quickly warn you about it. In last mock, a lot of students took the test, but they did not complete it. बहुत लोगों ने mock लिखा, but या तो either they could not finish it because they got panicky or they lost their nerves, और हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा कि 2 घंटे ज़्यादा है, we can do something better, right? जैसे रील्स देख लेते हैं, तो उन्होंने पेपर नहीं पूरा किया. प्लीज डोंट डू दैट. पेपर पूरा करना है. ओके, 2 घंटे बैठ के देना है विदाउट फेल. ऑल राइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन नाउ. कैन वी स्टार्ट? आई डोंट नो, समथिंग इज हैपनिंग. चलो लेट्स बिगिन. ओके, सो दिस इज अ वार्म अप क्वेश्चन. प्लीज डोंट आस्क मी ये क्लैट में आएगा क्या. ठीक है, दिस इज अ वार्म अप क्वेश्चन. थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा खोलते हैं, बिकॉज सेशन बहुत लंबा होने वाला है. इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, बहुत कुछ करने वाले हो. तो जल्दी से जरा ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन. लेट मी सी इफ माई मार्कर इज वर्किंग. मेरा मार्कर कभी कभी काम नहीं करता. होपफुली इट इज वर्किंग, है ना? यस प्लीज, जल्दी से जरा क्वेश्चन पढ़ना, समझना और बताना आंसर. रीड द क्वेश्चन, रीड द ऑप्शंस, डू सम मेंटल जिम्नास्टिक्स एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. देखते हैं कितने लोग
सही आंसर बता पाते हैं। ओके, मोर इंपॉर्टेंटली आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। मुझे ये देखना है इंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं, फिर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ओके, लेट मी चेक योर कमेंट्स, लेट्स सी हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स कम। मुझे भी नहीं पता करेक्ट आंसर क्या है, मैं तो सॉल्व करके बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो लेट्स सी, काफी लोग पता नहीं इमोजीज भेज रहे हैं, डैब डैब। ओके, सब तैयार हो गए सब, गुड गुड। So this is a warm up question, guys. Don't expect this question in CLAT, obviously, but this is just a warm up question. दिमाग की बत्ती जलाना जरूरी है ना, तो उसके बाद मजा आने वाला है। ओके, 4 3 4 5. So maximum answers I'm getting is 3. Arya is saying B. Arya means more than 5, मतलब 6 or 7 or 8. Okay, but majority of the answers I'm getting so far is 3. So let me check. Okay, everybody, so let me read the question. How many more meaningful English words can you make? More means what? You can't count spate. Spate को count नहीं कर सकते, more. Okay, so spate is already there. How many more meaningful English words can you make? Not proper nouns. Okay, proper nouns means what? Suppose you call your friend Tay. Okay, let's say you have a friend and you call your friend Tay. You can't say Tay is a word because my friend's name is Tay, है ना? You can't do that. So no proper nouns without changing the order of the letters. So you can't change the order, right? So for example, you can't say, okay, I'll make a word like T-E-A-T. You can't do that. You can't change the order. You can't skip letters, right? So you can't say, okay, after S I will take A. You can't do that from the word given below. Understood the question? Very simple. This question is about understanding the instructions, less about the correct answer. इतना लड्डू क्वेश्चन है, but instructions समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना. So let's see the answer. Spate I can't count, right? Spate means what? Spate means a deluge. Deluge means what? Deluge means a big flood, right? Spate of complaints. Okay, so spate I can't count, but next I can count is pate. पापी पेट का सवाल है, सुना होगा हिंदी में, वो वाला पेट ये नहीं है बिल्कुल भी. पेटी, पेट मीन्स व्हाट? पेट बेसिकली मीन्स योर टकला, आप योर हेड, योर बॉल्ड हेड बेसिकली इज कॉल्ड पेट. ओके, सो द portion below your hair is called pate. So this is one word. Second you can make is obviously 8, right? Third you can make is obviously at, and the fourth you can make is, it's a common noun, is spa, right? Common noun है, it's not a proper noun, it's a common noun. Common nouns can be counted, proper noun नहीं कर सकते. तो 4 तो मैंने बना दिए. But we can also make pat, a pat on your back. घर वाले क्लैट में टॉप 10 आएगा तो शाबाशी देंगे ना, कंधे पे ऐसे, वाह मेरे बच्चे शाबाश. पैट. 5 I have made. So pate, pat, 8, and then at. But am I missing anything? अगर कोई मिस करो तो बता देना, वरना आंसर तो आपके सामने है ना. अगर कोई मिस करो तो बता देना, just in case I miss something, तो बता देना. Otherwise we already have the answer. Am I right, everybody? So let me see. अब मैं जरा आंसर चेक करता हूँ सबके. So spa, pate, pat, 8, spa. Hansrata, very good, but you missed at. Okay, at is also a word, right? Am I right, everybody? So you guys tell me. अगर बोलोगे तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा. चलो, spat, very good, very good, yes. तब से मैं वेट कर रहा था. वेरी गुड. हु सेड दैट बाय द वे? हंसलता, यस यू डिड. नो, आई थिंक आर्या डिड दैट. आर्या, एम आई राइट? You wrote it, right? Spat. Very good. What is spat? Spat can have two meanings. It is the past form of spit. Spit. I'm not explaining. You know spit, right? She. The past form of that can be spat. Or spat can also mean a fight. Ram and Sham had a spat. India and Pakistan, we keep on having spats. China and India, we have spat. Spat is a fight.
So now let's count. We have spa, we have pat. चलो ऐसे काउंट करते हैं. We have spa, we have spat, then we have pate, then we have ate, then we have at, we also have pat. So now we have 6. So is the answer clear, everybody? So what should we mark? At least 5 or more. Not at least 5. 5 or more definitely. 6 तो है ही ना. तो correct answer would be more than 5. The correct answer is D. I don't know how many of you got it right, but well done, guys. Those of you who said D, well done. You're doing pretty fine with vocab. All right, next question, everybody. Let's check your answers. Yes, please. No, Shivani Tripathi, you can't change the order of the letters. Okay? You can't change the order of letters. Ape वगैरह. Then I can make more words. No, you can't change. Read the question properly. Therefore, this question was about understanding the instructions. It was not about solving the question. Question तो आसानी था. It was about understanding the instructions. Okay, everyone. Let me see. B B C B B B B B B C B B C. क्या बात. बहुत बढ़िया. Fair and lovely. बहुत ही सुंदर आंसर. आपका रंग निखर गया इस आंसर से. बहुत ही बकवास डायलॉग, बट लेट मी सी. Lovely, remember guys, lovely basically means attractive. Lovely is a very confusing word. Lovely looks like an adverb, okay? But lovely adverb नहीं होता. Lovely तो adjective होता है. Lovely is basically a word of quality. It is not an adverb. In other words, remember, can you use hardly before an action? Yes. Before an adverb is a word that qualifies a verb, adjective, or another adverb. Hardly can qualify a verb. We hardly study nowadays. Surreptitiously, secretly. He went there surreptitiously. He touched him, her gently. All of these can qualify. A, C and D can qualify verbs. They are adverbs. But can you use lovely with a verb? He lovely hit the dog. Right? But fair and lovely, yes. Fair is an adjective, right? And lovely. Lovely is also adjective. That means the correct answer is B. Well done. You guys are absolutely rocking it. क्या बात. शानदार आंसर. फेयर एंड लवली लगाने का फायदा देखा. बहुत बढ़िया. चलो अगला सवाल. प्लीज रिमेंबर लैटिन स्टेटमेंट्स, लैटिन फ्रेजेस, लैटिन मैक्सिम्स आते ही रहते हैं ना, तो एक आध पता ही होने चाहिए. करेक्ट. यू गाइज हैव डन सेपरेट क्लासेस ऑन दैट, आई नो दैट. तो मैंने सोचा थोड़ा सा पूछ लेता हूँ. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी क्विकली. ऑलराइट. अच्छा, नहीं लगाते. नो फेयर एंड लवली. क्या बात. नॉट टिपिकल इंडियन. हाँ, वेरी गुड. अच्छा है. अगर बोला होता हाँ लगाते हैं तो मैं आपको क्लास से भी ऐसे निकालता नहीं, बट निकाल देता. ओके एवरीबडी. उमेर मिर्जा से सी. सूरज सनफ्लावर. ये कैसा कॉम्बिनेशन है. बी. अच्छा, सूरज सनफ्लावर. ओके. सी डी ए. अरे 5 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ लो. सी डी सी बी ए डी सी. कुछ भी चल रहा है जिंदगी में. डी डी सी डी बी ए डी सी. ओके, बहुत बढ़िया. नाउ आई डोंट नो कहने वालों, जाग जाओ इससे पहले कि किस्मत सो जाए. क्या बात है. आई हैव बीन वॉचिंग सम एब्सोल्युटली हॉरेंडस मूवीज. उनके डायलॉग्स मैं पिक कर रहा हूँ आजकल, और मैं यूज भी करने वाला हूँ, है ना. जागो वरना किस्मत सो जाएगी. एड इन्फिनिटम बेसिकली मीन्स टिल इन्फिनिटी. विल गो ऑन फॉर एवर. माई लव फॉर यू इज गोइंग टू बी एड इन्फिनिटम, है ना. जब तक सूरज चांद रहेगा प्यार जिंदा रहेगा. एड इन्फिनिटम. क्वी बोनो. क्वी मीन्स फॉर, बोनो मीन्स गुड. गुड फॉर whom? ये अच्छा किसके लिए है. You use this for making policies, making laws, right? Suppose India makes a law that anybody who has long hair will not be given government subsidies.
Supreme Court would say, what kind of a law is this? Who does it benefit? Right? So, cui bono means good for whom? Magnum opus. Magnum means biggest. Opus is work, masterwork. Subpoena. Subpoena is not subpoena. Subpoena ऐसा नहीं है. Subpoena basically means under the threat of punishment. Non-bailable warrants, etc., are considered subpoena because if you don't do it, don't go to the court, don't go and surrender, you will be given a punishment. Subpoena is under the threat of punishment. Tabula rasa on the other hand means basically a clean slate. ऐसा slate जिसमें कुछ ना लिखा हो. Children are tabula rasa. You can frame them the way you want, right? Therefore, the correct answer is E. Wrongly paired ढूंढना है. Wrongly paired. Table of justice नहीं होता. Table of justice क्या होता है? Therefore, the correct answer is E. If you marked E, you have done a fantastic job. अपने आप की तारीफ कर लो. पिज्जा खा लो. Suraj, okay. Achha, I got that. All right. Anisha, you are right. And I can see a lot of correct answers also. But I see a lot of wrong answers also. तो प्लीज सबके सब अभी घर पे अगर दिवाली मना रहे हो तो एक कैंडल लेना है, हाथ रखना है और कसम खाना है कि मैं लैटिन फ्रेजेस, लैटिन मैक्सिम्स रिवाइज करूंगी. प्लीज डू दैट एंड कंफर्म इन द चैट एवरीबॉडी. जल्दी से बताओ जरा कि हाँ हम करेंगे सर. ऐसे हाथ रखो उस पर और कसम खा के बताओ जल्दी से, बिफोर आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ऐसे हाथ रखना है. ओके, एंड फिर कसम खाना है जल्दी से. और मुझे सेल्फी भी भेजना. ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल 5 पैसे का क्वेश्चन है ये, और मुझे चाहिए सारे के सारे करेक्ट आंसर्स. एब्सोल्युटली. ओके कितनी एनर्जी के साथ कह रहे हैं ओके सर, हाथ रख लिया सर. लेकिन पढ़ाई के टाइम पे एनर्जी कहाँ चली जाती है? थोड़ी और पढ़ाई कर लो. Remember everyone, if you study for next 2 months, the name of the place where you work might change forever. Okay, वेकेशन का जगह भी बदल सकता है. 2 महीने मेहनत नहीं की, मनाली मैक्सिमम. 2 महीने मेहनत कर ली, मॉलडीव्स, क्वाइट पॉसिबल. ओके, हाँ. ये अभिनंदन फोन की कसम खा रहा है. समझ आ रहा है अभिनंदन मुझे. Yes, please. What's the correct answer? Ashi says B. B for Bombay. 2 and 4. Nivetha D. Riya B. Arya B. Gauri B. क्या बात, बहुत बढ़िया. सबके सब B कह रहे हैं. Only Nivetha said D. Everybody else is saying B. B. 1 and 4. 1 and 4. 1 and 4 means C. Shivani. Krish says A. अच्छा. Oh. चलो, I will help you. He is in a fool's paradise. When you are in a fool's paradise, तुम्हें सच्चाई और झूठ में फर्क समझ नहीं आता. When you are in a fool's paradise, you can't differentiate between what is true and what is not true. है ना? अपनी ही दुनिया में रहते हो. A lot of politicians, for example, world over, live in their own fool's paradise. Correct? That is called a fool's paradise. अपनी दुनिया में रहते हो. You have no idea what is happening, what is true, what is false, what is reality, what is not reality. That means 1 will go with 3. 1 and 3, they are a good pair. And then you cannot see the wood for the trees. Wood basically is the entire jungle. Trees, you understand, right? So wood basically means big picture. Trees basically mean details. When you can't differentiate between the big picture and the details, you get confused. Then you cannot see the wood for the trees. Okay, so unimportant details from the really important ones. That means 2 and 4 make a pair. Okay, 2 and 4 make a pair, and 1 and 3 make a pair. But do we have 1 and 3? We don't have 1 and 3. That means 2 and 4 will make a pair. That means the correct answer is B. So if you marked B, your answer is correct. If you did not mark B, very clearly your answer is not correct. And I saw a lot of B's. That means you have done a good job. Straight from previous year papers. Okay, इसमें मैंने बस एक word change किया है. ये सब questions previous year papers के हैं. And remember, half the question I'm going to ask today are from previous year law papers.
तो ऐसा नहीं है कि लॉ में आते नहीं थे. It's just that from 2020 the paper pattern has changed of CLAT, but the questions level can remain the same, right? Okay, odd one out please. Not very hard. Let me see who gives me the first correct answer. Ria B, B, Snehal C, Doppelganger C, A, B, 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 Anisha A, B, 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 C, A, C. Okay, let me see. I think Preeti Gupta gave the first correct answer. I think so. Natural means whatever is natural. क्या बताऊं natural? Immanent means something which is inherent. जिसको लेके पैदा होते हो. Okay? And inherent is something which is natural. Right? For example, we sometimes say he's a natural singer. Means he was born with singing ability. है ना? Himesh Reshammiya, natural singer. He was born with singing ability. Tony Kakkar, natural composer. Born with ability to compose in 5 minutes. Right? Anu Malik, born composer. Music is immanent in them. भरा हुआ अंदर. They were born with it, right? Natural, immanent, inherent. But what is latent? Latent is dormant. ये आपके अंदर सोया हुआ है. आप इसको लेके पैदा नहीं हुए, सोया हुआ है. Latent is सोया हुआ, sleeping, छुपा हुआ. But these are natural things. Okay, you are born with them. Therefore, the correct answer is A, and that is why I said probably Preeti Gupta was the first person who gave the correct answer. But I see a lot of correct answers also. बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल तुमने आग लगा दी, आग, मजा आ गया. Okay, let's see what is the correct answer for this one, everybody. जल्दी से देखते हैं किसमें कितनी है वो कैप की क्षमता. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट करेक्ट आंसर कौन देने वाला है भाई? रिया. रिया, वन थिंग फॉर श्योर, यू आर प्रीटी फास्ट. ओके, करेक्ट कभी कभी नहीं भी हो, चलता है रिया, बट यू प्रीटी फास्ट, विच इज अ गुड थिंग. बट if accuracy is good, you are pretty fine. Okay, very good. Ria C, Krish D, Adit has come after some time. B, Doppelganger C, Preeti C, 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 C. Okay, चलो भाई, let me see. इंदर, नो प्रॉब्लम. देर आए तो क्या हुआ, दुरुस्त तो आए. क्या बात है, क्या बोला मैंने. So please remember guys, you have to find out a word that does not go with the honey. Honey के साथ कौन सा word fit नहीं बैठता, बस ये ढूंढना है तुम्हें. तो हनी पॉट होता है ना? हनी पॉट, हनी पॉट जिसमें हनी रखते हैं. हनी सकल इज अ प्लांट, राइट? हनी सकल एक प्लांट होता है. हनी कोम तो होता ही है, हनी कोम जिसमें हनी मिलता है, मधुमक्खी का छत्ता, राइट? इफ यू डू नॉट नो व्हाट इट इज, गो एंड थ्रो अ स्टोन एट वन ऑफ दोज. तुम्हें जो मधुमक्खियां हैं, they will tell you, they'll explain what a honey comb is. Okay, so but what is honey taste? Honey taste does not make sense, therefore this is the correct answer. That's it, because honey taste together does not make any sense. तो कौन सा बनेगा? सेंसिबल फ्रेज नहीं बनाएगा, honey taste. Therefore the correct answer is D. Now let me see. सूरज कहता है सर आपने रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? I don't watch too many movies. Only movies I watch are the cult movies that nobody watches. मुझे वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है. My favorite ones are by Himesh Reshammiya. Kurz, K-A-R-Z, Z is one of my favorite movies. Okay, let's see. अगला सवाल देखते हैं. चलो भाई, बहुत ही सिंपल. Now remember guys, this is basically a fill in the argument kind of question. If you don't understand what the paragraph is saying, you can't figure out what the correct answer is. Okay? आपसे आंसर निकलेगा नहीं अगर आपको पैराग्राफ समझ नहीं आया तो ध्यान से करना. ओके, वो क्या तो है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ ऑल्सो. ओके, चलो लेट्स सी. ऑल राइट, सूरज वो दिवाली की वजह से
चलो, सूरज कह रहा है सर आप आज खुश क्यों हो? सी व्हेन यू गाइस परफॉर्म वेल आई एम वेरी हैप्पी. तुम स्टार्टिंग में देखा था ना मैं थोड़ा सीरियस था, फिर देखा यार तुम लोग बड़ा अच्छा सॉल्व कर रहे हो तो फिर खुशी हो गई. अब सॉल्व नहीं किया तो फिर दुखी हो जाऊंगा. दैट इज वाई. ओके लेट मी सी. सी और डी आंसर्स आ गए भाई. बड़ा आसान क्वेश्चन. आई सेड द क्वेश्चन इज इजी. व्हाई? बिकॉज यू कैन फिगर आउट वेरी फास्ट क्या आंसर नहीं हो सकता. ओके नाउ लेट मी क्विकली टेल यू समथिंग. व्हेनेवर यू सी एंड, always remember guys, whenever you see and is known as an equalizer. Okay, equalizer. What is the role of an equalizer? Whenever you have x and y, okay, generally you would see that both the words are of similar types on the side, on both sides of and जब भी होगा बीच में ना, दोनों तरफ के वर्ड सिमिलर नेचर के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई से he is very kind and, can I say kind and dishonest? Can I say kind and cruel? nahi. If I say is very kind, I'll say kind and sincere, kind and hardworking, kind and whatever, positive. तो यहाँ पे देखो sinister. Sinister means what? Evil. And so I need something similar on this side. I need a negative word here, right? Innovative is positive. Enchanting basically means something which is very attractive. Enchanting beauty. Chant basically means to cast a spell or to create magic. Enchanting is something which casts a spell. देखा और दुनिया भूल गए, है ना? होता है कभी कभी. आप तीर्थन वैली गए और आप एन्चेंटेड हो गए वहां पे. स्विट्जरलैंड गए एन्चेंटेड. तो ये भी पॉजिटिव है, इसको भी आउट कर दो. ट्रैजिक हो सकता है, बट थिंक सिनिस्टर एंड ट्रैजिक. Sinister is evil. We need a similar word. Now disingenuous basically means dishonest. अब डिसाइड करो कौन सा वर्ड ज्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि विक्टिम एंड सफरर्स तो दोनों सेम हो सकते हैं ना. विक्टिम्स एंड सफरर्स प्रैक्टिकली सिमिलर. बट नाउ थिंक ट्रैजिक वर्सेस डिसऑनेस्ट. इवल के साथ ज्यादा क्या फिट बैठेगा? इवल के साथ डिसऑनेस्ट फिट बैठेगा ना. इवल, विकेड, डिसऑनेस्ट. ट्रैजिक वोंट फिट. सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी. पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा. इफ यू मार्क सी, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. And if it's not, then कोई बात नहीं, you must have learned something new, yes or no? So remember guys, we always focus on elimination. We never care about what is the correct answer. We always focus on what is not the correct answer. Correct? Arya Patil, yes, you are right. So please remember guys, if it's not something you can figure out, eliminate. अपनी जिंदगी में भी यही करना, याद रखना कौन तुम्हारे साथ है लंबे टाइम तक और कौन ऑनेस्ट है. बेस्ड ऑन दैट एलिमिनेट, राइट? यू वुड डू अ गुड जॉब. डोंट चूज फ्रेंड्स, एलिमिनेट. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन. अगेन लेट मी सी इफ यू कैन फिगर इट आउट. इट डजंट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स. जल्दी से बताओ आंसर. वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट. अभी पूरा 25 मिनट्स है. आग लगा देंगे, आग. Neha, yes. Is there a rule that says genocides cannot take the word dishonest? Okay. Let's see. Arya says A. Ashi says D. Arsleen D. Okay, A or D. Okay. Niti A. Parul D. Nancy D. Remember guys, if you can't do these kind of questions, it clearly shows that your language skills need to improve. अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना, तो लैंग्वेज स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी जरूर है. सो आई कैन सी द आंसर इज बिटवीन ए एंड डी. तनिष्क, गुड आफ्टरनून. नाउ रिमेंबर गाइस, whenever you are doing fill in the blank kind of questions or you have to find out what will come here, always pay attention to the words before and after the blank and pay attention to the prepositions also. Force to. When you force someone to do something, believe, suggest, agree, concede. Look at the word choices. When you force someone, you don't force people to believe, suggest or agree. But when you force someone, people might concede. Concede basically means to agree reluctantly. I hope it is clear everyone. You agree, but you agree not willingly. Let me give you an example. Suppose your family is planning a vacation to Switzerland
and it's your one of the minor papers in one of the NLUs. NLU में हो एक minor paper है और family जा रही है Switzerland 10 days 11 nights or whatever trip, and they are like, you have to write the exam, you stay back at college, right? Now will you agree? Suppose they threaten you, they say okay we'll disown you, तुम्हें हम घर से निकाल देंगे, तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे, जायदाद से निकाल देंगे, जिंदगी से निकाल देंगे. You might agree, but will you agree willingly? हाँ yes करो. No, you'll be like ठीक है यार, मतलब जायदाद से भी निकाल दोगे तो क्या ही कर लूंगा, स्विट्जरलैंड छोड़ देता हूँ. That's called conceding. When you concede, you reluctantly agree to it. You don't believe, you don't do anything, you do it reluctantly. Force कर दिया ना. Concede that, and therefore very clearly the answer is D. वैसे भी the first word will not be scrutinizers. Scrutinizers are people who minutely test, minutely examine. You're talking about people who are observers. Okay, scrutiny करने वाले, observe करने वाले अलग अलग लोग हैं. Observers sit and they just observe. Scrutinizers examine. Very clearly, if you read the paragraph, even the first word does not fit, and second very clearly does not fit at all. And the correct answer is D. Now, if you mark D, you have done a good job. Alifia, I can see. I'm not taking all the names because there are too many. Okay. सबके आंसर्स दिख रहे हैं मुझे, बस मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत ज्यादा है ना. करेक्ट. रितिका, अग्री करने में और फोर्सफुली अग्री करने में कोई डिफरेंस नहीं है. एक बच्चे को बोलो ये टॉफी खा, वो छीन के खा लेता है. एक बच्चे को बोले मिर्ची खा और उसे 50 थप्पड़ मारो और फिर वो खा लेता है. तुम्हारे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है. अग्री तो किया ना. लॉ पढ़ने जा रहे हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड विशिएटेड कंसेंट. सुना ये सब? प्लीज पे अटेंशन. कैसे होगा अदरवाइज? अग्री तो करा ना. 50 थप्पड़ मार के अग्री करवाना इज अग्री. You need to probably revise your vocab. All right, everybody. Let's see if you. This is one is a slightly hard question. ध्यान से करना, वरना वाट लग सकती है. Let's see. रितिका नाउ से ओ अच्छा. रितिका के दिमाग के बल्ब क्या कहते हैं उसे, लाइट ऑन हो गया. वेरी गुड रितिका, यू एटलीस्ट एक्सेप्टेड. ओके, बाकी लोग तो मानते भी नहीं है. That's a good thing. You are learning. Very good. Ritik, sorry, not Ritika. चलो, let's see what is the correct. ये question थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ध्यान से करना. Just pay attention, everybody. I'm just teaching you how to read better. Remember, guys, we do not do fill in the blanks at all. Thinking CLAT में नहीं आता. But this is what it is all about. It's about reading. Yes or no? D D D C C C C D D D D D C C C. ओके, समझ गया. C और D में से कोई एक होगा. C और D में से कोई एक होगा. बहुत बढ़िया, शानदार आंसर. C और D में से कोई एक होगा, तुम लोगों ने बोला. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज B. आई टोल्ड यू, इस सवाल को अंडर एस्टिमेट मत करना. तो थोड़ा सा तुम्हें झटका जरूर लगा होगा, है ना. सो I hope it is clear. Okay. Now remember, guys, this question is slightly hard. Why? Because D option actually looks absolutely correct. Okay. D option looks absolutely correct. In fact, the first word is better in option D, but not the second word. In option B is not the perfect answer. It is the most optimal answer. It's a very good question. Pay attention. I'll explain this in 10 seconds. Let me repeat, everybody. Option D looks very, very tempting, very attractive. In fact, the first word is actually fitting very well, better than congenital. Congenital basically means is what you are born with since birth. Genetic is even better, what you get from inheritance from your parents. Very beautiful word. Both words can fit. Genetic is better. I agree. Congenital, good, not so good. But look at the word pedagogy versus education. Pedagogy is method of teaching.
Education involves pedagogy. Pedagogy does not necessarily mean education. Yes or no? बच्चे को क्या मिलता है? बच्चे को तो एजुकेशन मिलता है ना. पेडागोजी तो मेथड होता है. पेडागोजी इज मेथड ऑफ टीचिंग. नाउ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन एंड टेल मी. मेथड ऑफ, सपोज you had the phrase method of education यहाँ पे. Suppose you had the phrase method of education यहाँ पे. अब क्या चूज करोगे? Including method of education. There is effect of environment including method of education or including education. क्या जाएगा? Think and tell me everybody. समझ आया? हाँ. मेथड ऑफ एजुकेशन विल कम इनटू पिक्चर ओनली व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन. नो, एजुकेशन की बात करेंगे तब तो मेथड आएगा. मेथड कहां से है? पहले एजुकेशन तो दो. दैट इज व्हाई दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन एवरीबॉडी, बिकॉज ऑप्शन डी इज वेरी वेरी टेम्पटिंग. बट इफ यू गॉट इट रॉन्ग यू मे हैव नोटिस्ड. अच्छा जल्दी से बताना, सबने नोटिस किया कि 99% स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग? यू मे हैव नोटिस्ड इट. एंड रिमेंबर गाइज, if everybody is getting a question wrong, don't worry about it. Forget it. Why? Because nobody got any marks. In fact, everybody lost. सबकी हार में कोई टेंशन नहीं है. टेंशन तब है जब बाकी सही कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो. याद रखना, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ रिलेटिव एग्जाम. इफ अदर्स आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी. इफ एवरीबडी एल्स इज गेटिंग इट राइट, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, यू नीड टू क्राई और स्टडी हार्डर. आई होप इट इज क्लियर. दिस वन इज अनदर वन. ये भी मुश्किल हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करना तो हो जाएगा, वरना टेंशन दे सकता है. ओके, प्लीज ट्राई एंड टेल मी. गुड क्वेश्चन एक्चुअली. यस प्लीज. कोई बात नहीं, देखो जिंदगी में तुम्हारे दिल तोड़ने वाले बहुत सारे सिचुएशंस होंगे. ये तो छोटा मोटा है, ये तो झेल जाओगे, है ना. बाकियों के लिए अरिजीत सिंह तो है ही. चलो, गिव मी द आंसर गाइस. Krish says C. Snehal, yes. But remember guys, in exam you would not know whether you're doing it right or wrong, so don't worry, it's okay. That's exactly what I'm trying to teach you. It's okay. Sometimes you would get wrong answers. होता है, चलता है, life है, होगा. B, 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 A, A, C, 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 A, B, 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 D, 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 A. Okay, this is a hard question, guys. I'll quickly tell you the correct answer. The correct answer is A. So if you got it right, you have done a good job. Now see, to an earlier kind of world, okay, suited by to. Look at the preposition here, to. Suited by. Now fix करो word यहाँ पे. Tradition to. Tradition of होगा ना. Tradition of, not tradition to, but fixation will fit. Fixation to. Fixation means when you are fixed with an idea, rigid with an idea, you don't change. Tradition will not fit. Inhibitions, irrelevant. Inhibitions means something that makes you ashamed, that makes you kind of shy. This will not fit, irrelevant है. एक ही ऑप्शन बचता है, and that is option A. If you noticed it, you got it right. अगर ध्यान नहीं दिया तो आंसर नहीं निकलेगा, ऑब्वियस है. I hope it is clear everyone. Is it? So this was a bouncer for a lot of you, but I hope you have learned from the mistake. If it's a paragraph, pay attention to everything, especially what comes before and after important words. And if it's a fill in the blank, then do it twice over. Okay, try again. This one is another good question. Try to solve it. Okay, बहुत अच्छा question है. और let me see if you can do it. This is basically checking your ability to read a paragraph properly. कर सकते हो कि नहीं? Let's see. शुभम राज, absolutely. देखो तुम लोग अच्छा कर रहे हो ना पेपर के अंदर, and you guys have been doing well in the YouTube sessions also. So I thought to give you some challenging questions, है ना. देखो इसमें जो weak है वो तो डर जाएगा, but जो मजबूत है दिल से, they will fight. All right, let's see. And you have to pay attention what comes before and after the blank. ध्यान से देखोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है. ध्यान नहीं दिया. And remember, if you want to be good in law, you have to be able to pay extra attention to everything. Okay.
That's the only way you can solve it. Trishir, Avi, Niti, A, Krish, B, Alifia, A, Arya, A, Snehal, A. So A, B is all I'm getting. Parul, A. Priti Kashyap, you have been slow today. Riya का भाई आंसर स्लो आया भाई. A, Inder, A, Chandni. All right, Aman Parashari. Okay, I'll help you with the answer. This is a very easy question. It says then each decides to change his or their position somewhat or to maintain the same position. Then they decide to keep the same position or change it. When will they do that? अगर मैं कहता हूं फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोजीशन को रखना है कि चेंज करना है, उसके पहले क्या करेंगे? पहले अपना पोजीशन बताएंगे ना. Which option? Option A. हो गया आंसर. What is the key word here, everybody? Then each decides. तो पहले क्या करेंगे? पहले अपना पोजीशन बताएंगे, फिर डिसाइड करेंगे रखना है कि चेंज करना है. That's it. Now look at other option C. Purpose is to resolve. Purpose के बाद then each decides. The prerequisite means requirement for deliberation. अरे तो then क्यों बोला इसके बाद? Then will fit only if you have stated your position and now you want to change it or stick to it. That is why the correct answer is A. And I saw a lot of A's. Well done, guys. Okay, next one. Another good question. Another easy question. If you can see what the question is asking. ध्यान से देखोगे बहुत आसान है, ध्यान से नहीं देखा तो गड़बड़. Yes, please. Sports lovers, you are probably coming under exam pressure. Okay, you are facing pressure problem, and it happens with 50% or more students regularly. Nothing new. Increase your mocks. Take at least 2 mocks per week in 20 minutes. I think you're not taking enough mocks. Okay, just increase your mocks. You'll do very well. Trishir C, Krish C. Okay, let's see. Riya B. Chalo, Riya has become faster. No, sorry, Riya C. Avi B. Arya B, Preeti C, Snehal B, Niti B, Ashi A, Preeti Gupta B, Parul Garg B, Alifia B. Okay, let's see. Chalo. Have you guys noticed that in the second part of the paragraph, the author says, what if someone comes from outside and they start doing their experiments on us? Why do you think the author is saying this? The author is saying this simply to say that we are doing experiments on animals and we are saying this is being done to protect the humans, right? Find antidotes to diseases such as cancer that kill humans and animals alike. We are doing experiments on animals. Then there's a gap. And then the author says, what if tomorrow somebody who is super intelligent comes from outside and does experiments on us? What do you think the author will say in the middle? Beech mein kya bolega? Suppose I tell you that you are beating a dog. Then I take a pause and I say, how will you feel if tomorrow somebody who is stronger than you comes and beats you? What do you think my feeling for the dog is? I'm pretty sure you understand, right? I feel for the dog. What I'm saying is what you are doing to the dog is not right. आप एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कल को कोई हम पे एक्सपेरिमेंट करेगा तो. So what is my opinion? My opinion is what you are doing to the dog is not correct. And that is why the correct answer is option B. Fit option B and read the paragraph once again. You'll understand. The option is not very clearly C, not D, not even A. A तो बिल्कुल ही नहीं होगा because it's saying benefit. If you read the first part, read the second part and find the connection, the question is very easy.
and it's a good question because it checks whether you can read the paragraphs properly or not. Correct? I hope it is clear. Nivedita Acharji, absolutely. Preeti Gupta, absolutely. Preeti Gupta, you have not been writing. You generally write these kind of comments. Very good. Alifia, okay, probably. Quite possible. I take so many classes. अच्छा है ना? चलो. Only 5 minutes left for my session to end. So I want you guys to try some quick questions, everyone. Jaldi jaldi. Let's see if it can be as good as it has been so far. Okay? ज़्यादा टाइम बचा नहीं. जल्दी से बताओ आंसर. Everybody. ये तो काफी लड्डू है. आई थिंक यू गाइज विल स्मैश इट फॉर श्योर, है ना? आशी बी, त्रिशिल बी, आर्या बी, अनिशा बी, स्नेहल बी. लेट मी सी. चलो भाई आ जाओ. बी और सी के बीच में लड़ाई चल रही है. फुटबॉल इवोक्स अ डैश रेस्पॉन्स इन इंडिया compared to cricket, which almost dashed the nation, boiling the nation, electrifies the nation, fascinating the nation, genuinely fascinates the nation. My answer is either B or D. Yes or no? A तो हो ही नहीं सकता. एक बोलने वालों जरा ध्यान तो दो. प्रीति गुप्ता, what is happening? है? My answer is either B or D. Correct? Now, football evokes a dash response. Can you guys see that there is a comparison? Football dash, but cricket electrifies the nation. बिजली का करंट लग जाता है इंडिया के लोगों को क्रिकेट के नाम से. Now, apocryphal means false. Apocryphal means false. False response? Does it even make sense? Obviously, D is out. Lukewarm, on the other hand, means very tepid, very soya sa, not very enthusiastic, right? It's like saying, okay, let's do 50 questions of English now, and you guys are like, okay, kar lete hain. That's lukewarm response. Okay, therefore the correct answer is B, option B, obviously. Clear? प्रीति गुप्ता, क्या हो गया तुम्हें? है इतना आसान क्वेश्चन? कोई बात नहीं, कभी कभी होता है. सचिन भी 0 पे आउट हो रहे, नो प्रॉब्लम. चलो भाई अगला सवाल. See, I don't have too much time left, so please, let's be fast. Yes, please. Let's see who gives me the first correct answer. प्रीति गुप्ता सी, त्रिशर बी, अनीशा सी. प्रीति, आज तुम्हारा दिन नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है. All right, so I got B. No, I got actually C or D, or some people are saying B also, but very few. The first correct answer I got was from, I think it was from Trishi, right? If I'm not wrong, but I have to check. I think so. Okay, so if I'm wrong, just excuse me, but the correct answer is audible. Now you have to pay attention here. क्या कर रहे हो? When children become more experienced with words, they already know how to pronounce, how to take, or how to pronounce the words, how to make the right kind of noise. So intelligible will not fit. They already know how to use words. This is out. Oral is related to ears. Okay. Oral impairment. कान में प्रॉब्लम हो तो oral impairment बोलते हैं. Right. Vocal is related to your voice. Walk is to speak. Now it says when children become more experienced with words, they find
that they can gain meaning without making what kind of sound? Sound that can be heard, which is called audible. Therefore, the correct answer is B. Is it clear, everybody? Not vocal. Vocal sound क्या होता है? Vocal is related to your throat. Vocal musicians, for example, or vocalist, one who uses throat to sing. Audible is something you can hear. In other words, the word you need here is hearable word. You understand? This is what you need here. यहाँ पे इसकी जरूरत है. All right, last question of the day, everybody. Niti, very good, well done. So this is the last question from my side, guys. So you need to answer quickly. Remember, everybody, after I leave, the next faculty will take over, and definitely the next faculty will take over. Until then, you have to be around. Okay, don't go anywhere. Just stay back. D. Let me know if it's clear, everyone, that you have to stay back, and the next faculty will take over after I leave. शुभम कहता है ज्यादा दिमाग लगा देता हूँ. दैट्स ओके, कोई बात नहीं. दिमाग है भी ना तो लगाओगे ही, और क्या करोगे, है ना. डोंट वरी, इट्स ओके. चलो, बी और डी. आई हैव गॉट बी और डी. लर्निंग इज मोर एफिशिएंट व्हेन इट इज रैपिड, फास्ट. Tedious is a negative word. Tedious means something which is boring, very mind numbing, requires a lot of efforts, routine. तो ये तो बेकार ही है. Learning is more efficient when it is tedious. No. Rapid, fast, fun. When do you think it will be more efficient? When it is fun, right? Not rapid or fast. It is less efficient when it is slow. Turtle slow. Or drudgery. Drudgery basically means laborious, boring and laborious, or boring and full of labor. तो देखो क्या होगा आंसर. Learning is more efficient when it is fun. It is less efficient, opposite, when it is boring and full of boring hard work. 2 + 2 1000 बार लिखो. राम जाता है 2000 बार लिखो. स्कूल, रिमेंबर. मैं अच्छा लड़का हूं 500 बार लिखो. By the time you end writing it, you are no more अच्छा लड़का. So therefore the correct answer is D for Delhi, everybody. Absolutely. Ria, yes. Drudgery is a negative word. Remember, guys, it's not hard work only, it's boring hard work. Okay? जाओ दुकान से धनिया ले आओ दिन में 100 बार. That's drudgery. Okay? For example, in prison they make you cut wood. जाओ लकड़ियां काटो. कितने काटने हैं? और जंगल साफ करो अगले 200 दिन तक. That's drudgery. All right. So everybody, thank you so much for joining me here. I will take your leave and your next faculty will take over. Don't go anywhere. Please stick around. और आपके अगले faculty आ जाएंगे तब तक. मजेदार, जबरदस्त. Okay. And I am meeting you at tonight at 9 o'clock. If you're free, please come and join the session at 9 o'clock. YouTube पे कर है और A-Late का सेशन है, तो हम थोड़े मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, धमाकेदार. छोटा सेशन रहेगा क्योंकि शाम को पटाखे भी चलेंगे, तो हो सकता है मैं क्वेश्चन कम और पटाखों की आवाज ज्यादा सुनाऊंगा. But don't go anywhere. Do join me at 9 o'clock tonight. And meanwhile, you guys stay, and the next faculty will take over. Arya Patil, absolutely you can do that. Correct. All right, guys, I'll take your leave. Thank you so much. And please stick around. The second All India Open Mock Test from 21st of October to 31st of October. Go ahead and register now in the BYJU'S exam prep app and compete against thousands of aspirants. अरे वाह, आ भी गए. चलिए, ऑलराइट. सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम. स्वागत है जी आप सभी का. वेलकम. गुड आफ्टरनून. होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. चलिए जी, स्वागत है आप सभी का. वेलकम. अच्छा है जब आप लोग आए. सिर्फ मैं कहानी गुजारा था.
वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है बहुत बहुत. गुड आफ्टरनून, वेलकम. So guys, today, as you are aware, we'll be doing current affairs for a couple of hours straight. 2 घंटे लगातार करेंगे. पर करने से पहले I want everyone watching right now quickly hit the like button. ये वीडियो सभी तक पहुंचाना है हमें, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए so that this video reaches out to everyone. So 1 hour of CR we actually have just completed. Now is the time to do current affairs for the next couple of hours. Let's see. चलिए, ठीक है जी. चलिए, तो अब देखते से पहले ही कर दिया सर, क्या बात है. वेरी गुड. चलिए, तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस. आफ्टर एवरी 10 सेट्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू शेयर योर स्कोर्स विद मी, राइट. आप सभी को पता है व्हाट इज द ड्रिल. जैसे ही 10 क्वेश्चंस होंगे आपको अपना शेयर करना है. पहले 10 क्वेश्चंस का कट ऑफ बहुत ही कम है, सिर्फ है 4 इज द कट ऑफ. देखते हैं कितने आप में से बच्चे हैं जो कि ये कट ऑफ पूरा कर पाते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट दे देता हूं मैं आप सभी को. आपको पता ही है खैर, पर फिर भी बता देता हूं गाइस. यू नो दैट द ऑल इंडिया मेगा मॉक, the second open mock for all of you is going live as we speak right now. 21st October से 31st October is the window. This mock has been created by our expert team. You have a great opportunity to know where you stand among thousands of peers. तो दोस्तों चलिए, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, क्विकली रजिस्टर कर लीजिएगा. चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये. What is the answer to this one? The 2022 field medal for mathematics, the winner is Marina Vyazowska. The person is the second woman to receive this prize. He hails from which place, which country? क्या बात है, वेरी गुड आशी. यस, देबारिता Animesh, this country has been in news. Well done guys. The answer is yes, it is Ukraine. Ukraine is the correct answer. So well done everyone who got this one right. बहुत बहुत बधाई आप सभी को. चलिए जी दोस्तों, well done, good start to this session. Well done with the correct answer. We all started off. चलिए second question की तरफ बढ़ते हैं. Who has been named as a vice chairperson of International Telecommunication Union for the years 2023 and 2024? बताइए जरा क्या है जवाब इसका. What is the answer? Guys, am I audible, visible? Do let me know कि मेरी आवाज सबको सही आ रही है ना. नीति, अपने वॉल्यूम थोड़ा सा ऑन, थोड़ा तेज कर दो बेटा. Second question, everyone saying the correct answer is yes, it is Aparajita Sharma. D is the correct answer. चलिए, आ रही है ना सबको आवाज? सर परफेक्टली फाइन. ऑलराइट, चलिए. हाँ देखो दोस्तों, पता होना चाहिए सबको. हाँ चलिए, कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे. Which state of India has regained its top position from West Bengal as the largest producer of vegetables? बताइए. Which state of India has regained its top position from West Bengal as the largest producer of vegetables? Very good. Devarita, Ashi, Tanishq already giving correct answers to this one. Well done. Yes, the correct answer is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, the state with the highest population, most populous state in India. Is the correct answer, Uttar Pradesh. चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं आगे. Which of the following state has ranked as third in the first edition of the State Ranking Index of, ये देख सकते हो, for the National Food Security Act? What is the answer guys to the fourth question? Odisha, Meghalaya, Chandigarh, or is it Andhra Pradesh? Which of the following state has been ranked third in the State Ranking Index for National Food Security Act? The correct answer for this, अच्छा ब्रदर्स आईडी के साथ हो आप लोग, ठीक है सिमरेला. ओके, द करेक्ट आंसर यस फॉर द फोर्थ क्वेश्चन इज डी. वेल डन अर्शलीन, रिया, पारुल, Simrela, well done. D is absolutely the correct answer. Andhra Pradesh, as Riya is saying,
is actually the correct answer. बहुत बढ़िया सृष्टि, तो ये पता होना चाहिए हमें. फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. चलिए बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. बताइए, which of the following country has signed an agreement, an MOU, with, you can see here, India on high impact community development projects in the country. किस कंट्री ने एक MOU साइन किया है दोस्तों? We all know it is when we discussed this question previously, we discussed about the war that is going on between Armenia and Azerbaijan. So it's either B or D. कौन सी है? Yes, it is B. It's Armenia, right? Armenia is the correct answer. Do remember we discussed the war that is going on between Armenia and Azerbaijan for a long period of time. तो अब अजरबैजान को थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन मिल चुकी है, पर खैर याद रखना अभी भी इसमें से कुछ हुआ नहीं है. रशिया से मदद मांगी अर्मेनिया ने. अजरबैजान, अर्मेनिया, ये दोनों जो कंट्रीज हैं काफी लंबे समय से लॉगर हेड पे हैं. देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में. चलिए नेक्स्ट, हु इज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI? बताइए जरा, GSI का डायरेक्टर जनरल कौन है इनमें से? Who is the Director General of the Geological Survey of India? Now guys, the correct answer for the sixth question is Dr. S. Raju. Not a single incorrect answer. Very good, Bhumika, Simrala, Nancy, Shreya, Anushka, Alifia, everyone. Good job, Arya, Inder, Snehal, Umer, Preeti, Arshlin. सभी ने सही जवाब दिया. ए बोला सभी ने. बहुत बहुत बधाई. अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. आपको पता होगा यूपी में एक जगह है जिसका नाम है सोनभद्र, राइट? यूपी में देयर इज अ प्लेस नोन एज सोनभद्र. सोनभद्र में ऐसे क्लेम आए थे कि भाई वहां पे 150 मिलियन टन कुछ सोना मिल चुका है. ये सब लोकल अथॉरिटीज जो थी उन्होंने ऐसी हवा फैला दी थी. पूरा जो इंडिया थी, इंडियन मीडिया थी, सभी कवर कर रहे थे इसको. उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे गई, ये 2 साल पहले की बात है. वहां गई और वहां जाके पता चला कि वो 150 मिलियन टन नहीं, वहां पे सिर्फ मुश्किल से 150 किलो सोना मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली इट वाज नॉट वर्थ इट, क्योंकि बहुत बड़ा मशीनरी एटसेट्रा लगानी पड़ती है टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड. तो इस वजह से कैंसिल कर दिया गया. तो ये डिसीजंस जो है कौन लेता है? ये जो डिगिंग है ये कौन करता है? ये जो रिसर्च है ये एक्चुअली करते हैं ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट इज देयर टास्क. इनकी टास्क होती है ये जाके ये सब चीजें करें. ठीक है, दिस इज व्हाट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द ऑफिसर्स एक्चुअली डू. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बढ़ते हैं आगे. ये आप मुझे बताइए क्या है जवाब यहाँ पे. तो देखिए जितेंद्र सिंह जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, हैज लॉन्च्ड अ टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन नेम्ड एज तिहान एट IIT हैदराबाद. व्हाट डज H स्टैंड्स फॉर इन तिहान? H स्टैंड्स फॉर व्हाट? जल्दी से बताइए. काफी लोगों ने बोल दिया है बी, सभी ने बोल दिया है बी. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. प्रीति, नैंसी, रिया, अनुष्का, वेल डन गाइस. यस, द करेक्ट आंसर इज hub. Hub is absolutely the correct answer. So well done everyone. Good job guys. Hub is absolutely the correct answer. चलिए बढ़ते आगे. मिशेल पूनावाला has received the prestigious Shiromani Award at the NRI World Summit that was organized by which of the following country? Quickly answer. Let's see कितने लोग आप में से सही जवाब दे पाते हैं. सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आप सभी को. यू ऑल आर हियर व्हाइल द इंडिया पाकिस्तान मैच इज गोइंग ऑन, राइट? उसके बावजूद आप यहाँ पे सारे के सारे. इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम को लेके काफी सीरियस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. इट्स डेफिनेटली समथिंग व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि भाई आप जो है अपने एग्जाम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी. शाबाश. चलिए जी, तो या द फुल फॉर्म हब. बढ़ते आगे. भूमिका, just quickly do a basic Google search, you'll get the answer, right? The effort that you put in to find the answers will help you retain the answer, right? The correct answer here, as Snehal is saying, Kushi, Neeti, सभी ने, शुभम ने सही जवाब दिया, ममता ने भी, United Kingdom is the correct answer. बहुत बहुत बधाई आप सभी को. Well done. 8th क्वेश्चन डन. लगता है पहले सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस में सभी लोग जो कट ऑफ है 4 का
वो पूरा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ग्रेट डिटेल में अबाउट द टेम्पल 360 वेबसाइट, राइट? आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द टेम्पल 360 वेबसाइट. Now when we're talking about the temple 360 website, this is the website जहां पे क्या हुआ कि सारे के सारे जो तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, उन सभी को आप जो है घर बैठे बैठे आप विजिट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी फायदे थी. अब द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जिन्होंने लॉन्च किया उनका नाम, राइट? दिस हैज बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली. द आंसर इज यस, इट इज मीनाक्षी लेखी. Meenakshi Lekhi is the correct answer. So well done everyone who got this one right. बहुत बधाई आप सभी को. चलिए जी बढ़ते हैं आगे. Let's move on to the next. बताइए जरा यहाँ पे. अब आगे बढ़ने से पहले क्विक अनाउंसमेंट. देखो दोस्तों, इफ anyone of you hasn't applied for a mock test series yet, guys, a great opportunity coming your way. 20 CLAT specific mocks, 25 for other exams which include ALET, SLAT, MHCET, all these exams. 9,000 plus practice questions, topic tests of every topic, 3 all India open mock test where you'll get video analysis by our expert faculty. Also, this test series is obviously created by National University alumni. It's a great opportunity for you to give as many mocks as possible. So make sure अगर आप में से किसी ने मिस आउट कर दिया है तो ये फटाफट से दे दें. चलिए अगला, which IIT has signed an MOU with Greenco to launch India's first dedicated school फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं. इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं. देखते हैं बोनस क्वेश्चन भी आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, राइट? चलिए द करेक्ट आंसर, सब जने ए बोल रहे हैं. सिर्फ त्रिशिर ने सही जवाब दिया और श्रेया ने. वेल डन उमेर, त्रिशिर, श्रेया. द करेक्ट आंसर IIT हैदराबाद. गाइज एक IIT है. There's a IIT which is all set to open in a new country. There's अभी एक हमने bilateral agreement किया है एक कंट्री के साथ जहां पे हम अपना IIT उस कंट्री में ओपन कर रहे हैं. तो कौन सी कंट्री में हम अपना IIT जो है उसको ओपन कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है. जरा बताइए which country we are doing this. The answer, very good Animesh, Ashi, Preeti, well done. The answer is UAE. Well done to all of you, got this one right. दोस्तों 10 क्वेश्चंस हो गए. फर्स्ट सेट में कट ऑफ था 4, सिर्फ 4, only 4 was the cut off. How many of you were able to clear the cut off? Do share. कौन आप में से कौन कौन है जिन्होंने 4 का कट ऑफ क्लियर कर लिया, ये मुझे बताइए. फर्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस में. बहुत बढ़िया. 8 आए, बहुत खूब बहुत खूब. 10, क्या बात है. 8, 7, 9, 8, everyone. Well done, well done. Good job guys. 6, 8, very good. Now guys, I can see that everyone is scoring in the region of 7 to 8. Most of you, and some of you have scored 10 as well. Very good. Simrala, everyone. Lakshmi, good job. Neeti, Alifia just made it to the cutoff. अब दोस्तों 11 से 20th क्वेश्चन तक के लिए the cutoff is increased. Now the cutoff is 6. 6 is the cutoff. ठीक है, अब देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हैं. चलिए let's go. Let's see if you can clear this cutoff. चलिए, what is the answer? First ALH squadron has been commissioned by the Indian Navy at the INS Digha, Visakhapatnam. What is the name? This has been asked previously as well. सभी लोगों ने सही जवाब दे भी दिया. पारुल, very good. Trishir, Srashti, Shreya, Bhumika, well done guys. It is, yes, it is the INAS 324. तो बहुत बढ़िया. फर्स्ट क्वेश्चन का ज्यादातर सबने सही जवाब दिया. वेल डन. Which of the following FMCG company has become the official promoter of Eveready Industries after acquiring 38.38% share of the Eveready industry? बताइए जरा. Eveready आप सबने सुना ही है इसके बारे में. हाँ, बैटरी वगैरह काफी फेमस है इसकी. चलिए बताइए जरा क्या है जवाब यहाँ पे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? चलिए बहुत खूब. मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. सी और बी को लेकर काफी कंफ्यूजन है, कुछ डी भी बोल रहे हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, राइट. सी, बी और डी में कंफ्यूजन था आप तीनों, आप सबको. द करेक्ट आंसर however here
is A. तो देख सकते हो दोस्तों, गलत हो गया हमारा, बर्मन ग्रुप being the correct one. चलिए बढ़ते हैं आगे. Name the Indo-American woman who has not been inducted in the 2022 8th edition of the Forbes list of America's richest self-made women. What is the answer here? बताइए जरा. 13th question, क्या है जी सही जवाब? What is the correct answer? The correct answer for the 13th question, Leena Nair. Leena Nair has not been included, right? All the others are there. D isn't. चलिए बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. राहुल नार्वेकर has become the youngest speaker of which state's legislative assembly after defeating Rajan Salvi? Now this is an important question. What is the answer here? Let's see how many of you give the correct answers to the 14th question. आशी बोल रहे हैं D, प्रीति ने भी D बोला है, सारे लोग D बोल रहे हैं. चलिए, well done. Yes, D is the correct answer. Maharashtra is the correct answer. Well done, everyone. Giving correct answers. Good job. Saujanya, Umer, Preeti, Jayesh, Khushi, absolutely correct. All of you. All right, moving on. Danish badminton player Victor Axelsen has won the 2022 Malaysian Open. He defeated whom? अब ये दोस्तों defeated whom वाले questions जो हैं थोड़े tricky होते हैं. But don't be too hard on yourself if you are not aware of the answer. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर ये नहीं पता होते किसको हराया तो कोई चक्कर नहीं. हमें पता होना चाहिए विनर कौन है. 90% ऑफ द टाइम विनर्स पूछते हैं हमसे. एलेट कभी कभी पूछ लेता है, रनर्स अप भी, बट विनर्स ज्यादातर केसेस में विनर पूछते हैं हमसे. तो ये पता होना चाहिए हमें कि विनर है विक्टर एक्सेल्सन. विक्टर एक्सेल्सन इज द विनर. राइट, दिस वी शुड बी अवेयर ऑफ. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 16th, हियर वी गो. व्हाट इज द आंसर? Which of the following Indian multinational information technology companies has been awarded the Microsoft Partner of the Year award for healthcare and life sciences? Healthcare और life sciences के लिए किसको बताइए, किसके साथ पार्टनरशिप करी है? बताइए, पार्टनर ऑफ द ईयर किसको बोला है? What is the answer? चलिए, ए, बी और डी मुझे मिक्स्ड ऑप्शंस आंसर मिले हैं. सी भी बोला है सृष्टि ने. द करेक्ट आंसर इज डी. वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड नैंशी. द आंसर इज HCL. HCL टेक्नोलॉजीज इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. है ना जी? शिवनादर, पता होगा आपको HCL के बारे में भी. Alright, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following state-owned enterprise has been recognized as the most preferred workplace of 2022 by the team Marksmen in association with India Today? What is the answer here? बताइए जरा, क्या है जवाब यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का? The correct answer to this, it is NTPC. NTPC. Very good, Alifia giving correct answer. Ashi, Prakhar, well done. Bhumika, Debarita, Umer, सृष्टि, आर्या, well done, well done. नीति, पारुल, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत खूब, शाबाश. B is absolutely the correct answer. Those of you who have just joined us, guys, let me remind, there's an all India mega mock going on. आप में से मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने ये ऑल इंडिया मेगा मॉक के लिए रजिस्टर कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया, immediately after the session ends, do register this for this, right? ये बहुत जरूरी है, एकदम ज्यादा मतलब नॉन नेगोशिएबल है. सबको रजिस्टर करना ही करना है इसके लिए. यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी कहाँ आप हो, वेयर डू यू स्टैंड, राइट? यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ये अपीयर करें इस मॉक के लिए और इसी विंडो के बीच में दें, राइट? तो ये आप याद रखिएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 18th क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने. क्विकली रीड दिस एंड शेयर द आंसर. बताइए क्या है जी सही जवाब? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? वेरी गुड, रजिस्टर कर लिया है. वेरी गुड, वेल डन. चलिए जी, सी बोल रहे हैं सूरज, अलीफिया, प्रीति ने बोला बी, और बी बिल्कुल सही जवाब है. स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद टाटा पावर फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड 4 gigawatt solar cell and 4 gigawatt solar module manufacturing. The answer is yes, it is Tamil Nadu. Tamil Nadu is the correct answer for the 18th question.
चलिए जी, बहुत खूब। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following state has been recognized as the best performer state for the third time in a row in the state startup ranking? क्या गुजरात है क्या आंसर? ये तो 100 बार कर लिया होगा, अब तो आप लोग बिल्कुल ही तो मतलब कंटेस्ट हो चुका होगा आपके सभी के। वेरी गुड रिया, एज वाज एक्सपेक्टेड, सभी को पता होगा ये, तो वेल डन। यस, द करेक्ट आंसर बीइंग बी। सो बहुत बढ़िया, गुजरात is the correct answer, not a single incorrect answer as was expected. शाबाश, बहुत खूब, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। Very good everyone. All right, let's move on to the 20th question. Who among the following has been appointed as the president of Paris-based Financial Action Task Force? अरे FATF से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आई है, आप सभी को पता होगा। सुना है ना आपने क्या हुआ? FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान, ये आज के न्यूज़पेपर में आया जी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पाकिस्तान हैज बीन removed from grey list of FATF. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये बताता है कि आपका जो पैसा है, वो पैसा लेके जो बाकी कंट्रीज हैं वो क्या करती है उस पैसे का इस्तेमाल, क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज में करती हैं, क्या टेरर फंडिंग में, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, क्या करते हैं उस पैसे का, ये सब चीजों के लिए रैंकिंग्स दी जाती है। तो ग्रे लिस्ट मतलब रिस्क है, ब्लैक लिस्ट मतलब FATF की तरफ से एकदम ही नो है कि भाई इनके साथ तो बिल्कुल ही मत करना आप। तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट में थी पाकिस्तान, अब ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया गया है इनको, तो ये अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, मीनवाइल 20 क्वेश्चंस डन। अब आपका स्कोर बताइएगा मुझे, ओवरऑल स्कोर आपका होना चाहिए अभी 10, राइट, 10 होना चाहिए आपका ओवरऑल स्कोर कट ऑफ के हिसाब से। और अगर आपने 11th क्वेश्चन से ज्वाइन किया है हमें, तो आपका इस सेट का कट ऑफ जो है वो होना चाहिए 6। कितना आया जी आपका स्कोर, आप जरूर शेयर कीजिए। वेरी गुड अदिति, आर्या, देवारिता एंड Aditya Agrawal, Nancy, Srishti, Simrela, Ria, Neeti, Umer, you all have passed the cutoff. Very good, congratulations, good job. Parul, Prakhar, Bhumika just managed it. Very good. Preeti, Trishir, Inder, Animesh, Alifia, Preeti, Ria, शुभम, श्रेया, वेल डन टू ऑल ऑफ यू, गुड जॉब गाइस, आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट सेट जो क्वेश्चंस है 21 to 30, द कट ऑफ ऑब्वियसली विल इंक्रीज, नाउ द कट ऑफ इज 7, राइट, 7 है जी कट ऑफ। देखते हैं आप 7 कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं या नहीं, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस आफ्टर 30 क्वेश्चंस आपका जो कट ऑफ है वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं 17, उसके बाद 40 क्वेश्चंस के बाद अलग होगा, 50 क्वेश्चंस के बाद चलता रहेगा इस तरह से। पर चलो बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, ये सब चीजें एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल सही कहा सूरज ने, कहा सर यूएस डोमिनेट करता है FATF को, और अभी उसने F-16 के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया, ये सब चीजें करा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब चीजें, ये सब पॉलिटिकली कनेक्टेड रहती हैं। इंडिया का रिलेशन कैसा है यूएस के साथ, इन सब चीजों का भी फैक्टर है, राइट। पाकिस्तान के साथ क्या होगा उसमें, तो ये सब चीजें भी बिल्कुल लिंक्ड होती ही हैं, बट ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, but yes, these are all assumptions that we can derive. All right, 21st, who among the following person has been appointed as the next Indian ambassador to Kuwait? The answer सभी लोग सी कह रहे हैं, डॉक्टर देख सकते हो आप, डॉक्टर आदर्श स्वाइका, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, ये टफ क्वेश्चन था, सभी ने सही जवाब दे दिया, मानना पड़ेगा आप लोगों को, पढ़ाई कर रहे हो जबरदस्त। All right, who among the following has been awarded the CII Quality Ratna Award 2021 for his contribution to building the competitiveness of the Indian industry? What is the answer? ये बताइए जरा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं सी, अजीम प्रेम जी, सब ने, एक देवारिता ने ए बोला, अशोक सूता और लक्ष्मी ने, आशी ने, स्नेहल ने, बहुत खूब। यस, द करेक्ट आंसर इज अशोक सूता। अशोक सूता इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही कम लोगों ने आप में से सही जवाब दिया है दोस्तों। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी आपके सामने,
23rd question. What is the answer? What is the theme of International Day of Cooperatives? ये देख सकते हो आप, which is observed annually on the first Saturday of July. What is the answer? बताइए जरा. क्या है जवाब 23rd क्वेश्चन का? बी बोल रहे हैं त्रिशिर. The correct answer, cooperatives for climate change. Now this was actually discussed in the recent class that we conducted in which batch? I think in the combo batch we discussed this in great detail. Cooperatives for climate change. अभी कल परसों की ही क्लास थी जहां पे हमने ये डिस्कस किया था. Cooperatives for climate change is actually the correct answer. चलिए, let's move on to the next one. 23rd question done. Let's move on to the 24th question. Here we go. Very easy. 14th PM of Israel. Who is the current Prime Minister of Israel? क्या है जवाब? बिल्कुल, ये तो सभी को पता है. The answer, Yair Lapid. Right, C is the correct answer. सभी को पता होगा, तो एक भी गलत जवाब नहीं आएगा. रिया पांडे, रिया वर्मा, अलीफिया, नैन्सी, श्रेया, सिमरेला, आर्या, सृष्टि, खुशी, अलका, लक्ष्मी, स्नेहल, देवारिता, शुभम, सभी ने सही जवाब दिया. अमन, नीति, आशी, चांदनी, शुभम, अंजलि. वेल डन गाइस. सी बिल्कुल सही, आप सभी का जवाब स्पॉट ऑन. गाइस, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी ज्वाइन किया वीडियो और उसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो भाई ये गलत बात है. ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन की हेल्प करते जाएंगे. सारे क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू योर बिट. आपका बिट क्या है भाई? आपको लाइक करना है वीडियो को और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. तो ये दोनों काम आप सभी को करना है, मैंडेटरी है भाई आप सबके लिए. चलिए, आगे बढ़ने से पहले क्विक अनाउंसमेंट. अगर आप में से किसी ने हमारा मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लिया, फटाफट से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. 20 CLAT specific mocks, 25 for all other mocks, so 45 in total. The best way to prepare is through mocks. चलिए, name the project which was launched by the Renew Power in association with the United Nations Environment Program and Self-Employed Women's Association of India to train women salt pan workers as solar technician. ये बताइए. वेरी गुड नीति. चलिए, क्या है जी जवाब इस क्वेश्चन का? क्विकली शेयर द आंसर फॉर द 25th क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर, वेल डन, इट इज प्रोजेक्ट सूर्या. गुड जॉब त्रिशिर. अलका, त्रिशिर बहुत बढ़िया दोस्त. लगे रहे लगे रहे लगे रहे. ये तेरी स्टोरी बहुत ही शानदार है ना? मेहनत करते रहे. शाबाश, बहुत खूब. Very good everyone. Well done Simrela, Neeti, Ashi. Very good Srashti, Asmita. Well done guys. Project Surya is absolutely the correct answer. चलिए जी, very good Aditi, Priya, Preeti, Neeti, Mamta. Well done. Okay, so which of the following Indian city has been ranked as 103 in the QS Best Student Cities Ranking 2023? आप में से कई लोग मैच देखने चले गए हैं, ये गलत बात है. फटाफट से वापिस आओ. ठीक है, मैच देखने मत जाओ यार. आपसे इससे जरूरी कुछ नहीं है, मैच तो होते रहेंगे. इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं यहाँ बैठा हूँ यार. आपको भी यही होना चाहिए दोस्तों, है ना? पहले बताओ तो छुट्टी ले लेते अपन सब, बट ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए दोस्तों, ये मैच तो होते रहेंगे यार. ये हर साल होंगे. T20 वर्ल्ड कप इस बार है, अगले साल वर्ल्ड कप है, उसके अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप होगा. तो होता रहेगा, हर साल होगा. हमारे लिए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इसी साल है. मैं तो अगले साल भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना? पर आपको इसी साल होपफुली, राइट? तो वी हैव टू मेक श्योर दिस ईयर काउंट्स. द आंसर, yes, it is Mumbai, right? Best student cities in 2023. The answer, as Neeti is saying, is Mumbai. बहुत खूब, बहुत बढ़िया. चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 27th, here we go. Please tell me what is the correct answer. Read it and share the correct answer. क्या है जी सही जवाब? फटाफट से बताइए. What is the correct answer? स्कोर तो देखी ले, क्लास में भी रहेंगे. हाँ, और क्या, सही बात है. चलिए, 27th क्वेश्चन. What is the correct answer? The correct answer, everyone saying, is the DRDO.
बिल्कुल सही। दोस्तों मुझे बताइए, अभी डीआरडीओ के नए हेड, न्यू हेड बन चुके हैं, तो नए हेड का नाम बताइए, नए हेड का नाम बताइए, डीआरडीओ के नए हेड का नाम बताइए। दिस इज द बोनस क्वेश्चन, क्विकली शेयर द नेम ऑफ द न्यू हेड ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के नए हेड का नाम बताइए जल्दी से। चलिए डन है। समीर कामत सभी ने कह दिया, बिल्कुल सही, वेल डन। बोनस क्वेश्चन सभी ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाई आप सबको, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू, फैंटास्टिक। दिस इज यस, समीर कामत इज द करेक्ट आंसर। ये तो शॉर्ट शॉर्ट को लीड क्वेश्चन है, पक्का ही पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम, आपको पता है, इन वन एग्जाम और द अदर दिस विल बी देयर। न्यू हेड इज डॉक्टर समीर कामत, पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखना ये। चलिए मेगा मॉक आप सभी को पता है रजिस्टर करना ही है, जल्दी से कर लीजिएगा। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की विंडो है, इस बीच में अगर आपने दिया तो ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following state government has signed an MOU with National Thermal Power Corporation Limited NTPC for the development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park in the state? क्या है जी सही जवाब, जल्दी से बताइए। What is the correct answer? Which of the following state government has signed an MOU, an agreement with National Thermal Power Corporation Limited for the development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park in the state? The answer, सूरज कह रहे हैं जी मध्य प्रदेश, इंदर कह रहे हैं गुजरात, देवारिता ने कहा राजस्थान, और देवारिता और आर्या और सिमरेला सही है। करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान। अग्रीमेंट साइन किया इन्होंने एनटीपीसी के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्विकली, here we go. In which of the following cities the Prime Minister has virtually inaugurated Bosch India's first smart campus? Now this has been discussed previously in multiple sessions. Let's see if you remember the correct answer. Is it Mumbai, Noida, Bengaluru or Visakhapatnam? The correct answer is सभी लोग कह रहे हैं बेंगलुरु, जो कि एकदम सही जवाब है, वेल डन, गुड जॉब देवारिता, नीति, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई आप सबको, वेरी गुड। टैंची, लक्ष्मी, आर्या, खुशी, प्रखर, बहुत खूब, वेल डन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 30th क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, बताइए क्या है जवाब। नेम द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा who has been honored with the Ayurveda Ratna Award by the UK Parliament? क्या है जी सही जवाब बताइए। What is the correct answer to the 30th question? सूरज बोल रहे हैं ए, इंदर ने बोला सी, अलीफिया ने भी बोला ए, और the correct answer is actually D. It's Tanuja Nesri. So Devarita got this one right along with Shubham and Lakshmi, अलका, नीति, शाबाश, गुड जॉब नैन्सी, आशी, सृष्टि, देवारिता बिल्कुल सही, वेरी गुड, तनुजा, निसारी एब्सोल्युटली करेक्ट। जल्दी से दोस्तों मुझे बताइएगा, आफ्टर 30 क्वेश्चंस आप में से कितनों का स्कोर 17 है? कट ऑफ आफ्टर 30 क्वेश्चंस 17 किस का आया? और जो थर्ड सेट, पीपल हु हैव जॉइंड अस बिटवीन 21 to 30 क्वेश्चंस, देयर कट ऑफ इज 7। कितनों ने कट ऑफ क्लियर किया, जरा देखते हैं हम, बताइए जरा कितनों ने किया है? 7 आए, जस्ट क्लियर किया है हमने, वेरी गुड। श्रेया 24, 22, नैन्सी, देवारिता वेल डन, क्या बात है, अदिति वेरी गुड, सृष्टि, अमन वेल डन, शुभम वेरी गुड, त्रिशिर, सिमरेला, प्रखर वेल डन, रिया शाबाश, गुड जॉब। चलिए जी वेरी गुड अनिमेश, अनिमेश और मेहनत करनी है दोस्त हमें, आप बहुत आगे थे, मुझे याद है क्लास में जब
हम टेस्ट वगैरह करते थे तो आप फर्स्ट रैंक लाया करते थे, तो ये स्कोर मुझे डिसअपॉइंटेड विद योर स्कोर। अच्छा है, पर आपसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। वेरी गुड नीति, अलीफिया जस्ट अबाउट मेकिंग इट टू द कट ऑफ बेटा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों में। वेरी गुड इंदर, प्रिया, प्रीति, अदिति ने स्कोर भी शेयर करी। देखो अदिति इज डूइंग सच अ गुड जॉब फॉर ऑल ऑफ अस, शी इज शेयरिंग द स्कोर इन बिटवीन। तो देखो भाई पाकिस्तान का स्कोर 1 for 1 है। कौन आउट हुआ ये भी बता देना यार अदिति। बाबर आजम गया क्या? चलिए, ऑलराइट द नेक्स्ट। पिछली बार कट ऑफ था 7 है, तो इस बार ऑब्वियसली द कट ऑफ हैज टू इंक्रीज। कट ऑफ इज 8, राइट? 8 इज द कट ऑफ, ये पता होना चाहिए। बाबर आजम आउट हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात अनिमेश। चलिए, who among the following has been crowned as Miss India World for the year 2022? कौन है ये? इंदर, वेरी गुड, स्वागत है भाई आपका भी। बिल्कुल द करेक्ट आंसर सिनी शेट्टी। यार ये कैसे नहीं पता किसी को? अलका, वेरी गुड, अब आए आंसर्स। शुभम, वेल डन एवरीवन। यस, द करेक्ट आंसर बीइंग सिनी शेट्टी, सी इज द करेक्ट आंसर, right? C is the correct answer. Sini Shetty has been crowned as Femina Miss India World 2022. बिल्कुल सही जवाब for the 31st question. Let's move on to the next one. Who among the following has won the first Formula 1 British Grand Prix at Silverstone? अब ये दोस्तों ग्रैंड प्री क्वेश्चंस बहुत रेयर केसेस में पूछेंगे आपसे, बट यार वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर पूछ लिया तब क्या, तब हम इधर उधर नहीं देखने चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या आंसर है। क्या है जी सही जवाब? ये देखो इंदर को खुशी हो गई एकदम, मिस इंडिया की बात करती, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कार्लोस सैंज। चलिए जी, अलका को पता था ये, बहुत खूब, सिमरेला को भी पता था, वेल डन, गुड जॉब गाइस। कार्लोस सैंज इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। Vivek Express holds the title of the longest train route in the country in terms of distance as well as time. It covers how many states of India? कितने states cover करती है जी Vivek Express? These Grand Prix questions are confusing, sir. I know. और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट भी ना हो बिल्कुल इनमें, तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो कोई बात नहीं ना, मैक्स वर्स्टैपन मैं समझ सकता हूँ हमने क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर ग्रैंड प्री वही जीते हैं, तो बस ब्रिटिश ग्रैंड प्री जो पहली हुई है उसमें वो जीते हैं। मोटो जीपी भारत में पहली बार हुई है, ये भी पता होना चाहिए बीच में अपन को। चलिए, द करेक्ट आंसर हियर इज 9, राइट? 9 स्टेट्स बहुत होते हैं दोस्तों, 9 स्टेट्स के को ये क्रॉस करते हुए जाती है। 9 इज द करेक्ट आंसर, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। चलिए बढ़ते आगे। Who among the following has been sworn in as the new Chief Minister of Maharashtra after replacing Uddhav Thackeray? लड्डू क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, इससे इजी क्या हो सकता है दोस्तों? आप बताइए मुझे, what can be easier than this? The correct answer for the 34th question is yes, it is B. Eknath Shinde. Eknath Shinde is the correct answer. So do remember this. B is the correct answer. Chief Minister of Maharashtra after replacing Uddhav Thackeray. Moving on to the next one. Who among the following javelin throwers has won the gold with a best throw of 90.31 meters at the prestigious 2022 Diamond League? मुझे बताइए कौन थे ये? इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, 90 मीटर्स के ऊपर का थ्रो लगातार 3 बार फेंका, और उसमें 4 बार फेंका था बट एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बट 3 बार, सोचिए, एक बार फाउल हो गया था, मेरा मतलब है। तो कौन है जी? द करेक्ट आंसर इट इज एंडरसन पीटर्स। नहीं बेटा, इट इज नॉट नीरज चोपड़ा, इट इज एंडरसन पीटर्स, राइट? इन्होंने फेंका और इतना दूर फेंका कि कोई पकड़ भी ना पाया, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following sports company has become the official sponsor with the Indian Olympic Association for the Birmingham Commonwealth 2022? इसके साथ ही Hangzhou Asian Games 2022 and the Paris Olympic 2024। बताइए इनमें से कौन बन गया ऑफिशियल स्पॉन्सर विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? क्या है जी सही जवाब? द करेक्ट आंसर हियर इज for the 36th question, it is
अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अब दोस्तों यही है, आप देखिए अभी रिसेंटली ये इनिशिएटिव लिया गया है अडानी ग्रुप द्वारा, तो रिसेंटली सर्च भी आया इनकी इनकम में भी, तो आप देख सकते हैं ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 36th क्वेश्चन, डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर अडानी स्पोर्ट लाइन। तो बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं, जैसे देवारिका ने दिया, त्रिशर ने दिया, आशी ने दिया। वेरी गुड, वेल डन टू ऑल ऑफ यू, सब बहुत लोगों ने दिया है, बधाई आप सबको, खुशी, वेल डन। Which of the following company has received approval from the Competition Commission of India to acquire a minority and non-controlling stake of 1.28% of the equity capital of Bharti Airtel Limited? Competition Commission of India ने ओके कह दिया इनको। अब ये कौन है जी, किसको ओके कहा यहाँ पे? गूगल को। अब गूगल को क्यों? क्योंकि आप देखिए ये क्यों कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्यों जाएगा ये मैटर, ये तभी जाएगा जब गूगल को सर्च इंजन क्या कोई प्रॉब्लम होगी जिसमें, अब इसमें से किसमें प्रॉब्लम है, इशू हो सकता है, गूगल इज द आंसर। अब गूगल में आप सर्च करोगे बेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर, अगर गूगल का ही स्टेक है एयरटेल में, तो गूगल क्या करेगा? 1% स्टेक है भाई इसका, तो हर जगह गूगल एयरटेल को ही प्रमोट करेगा, एयरटेल को ही करेगा। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आपको, आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, और क्योंकि ये जो स्टेक है बहुत ही माइन्यूट स्टेक है, इस वजह से भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोड़ी सी लीनियंसी रखी है, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सर्च इंजन के मामले में बिल्कुल सृष्टि जैसा कह रही है, मोनोपोली है गूगल की मोनोपोली है अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो। चलिए, Owen Morgan has recently announced his retirement from international cricket. He was associated with which of the following cricket team? कौन सी क्रिकेट टीम को उन्होंने 2019 में जिता दिया था वर्ल्ड कप? What is the answer for the 38th question? The correct answer is England. इंग्लैंड। बेटा न्यूजीलैंड कैसे मार्क कर दिया बेटा आपने, बहुत हैरान हुआ हूं मैं। इंग्लैंड जीती थी वर्ल्ड कप 2019 का, पता होना चाहिए हमें, पहली बार जीती इंग्लैंड 2019 में। न्यूजीलैंड इज येट टू विन द वर्ल्ड कप। द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए बहुत खूब, सभी ने सही जवाब दिया, श्रेया, आर्या, ज्यादातर सबने, मतलब अमन, वेल डन, गुड जॉब। नीति, शुभम, आशीष, सिमरला, अलीफिया, रिया, प्रीति, अदिति, वेल डन, देवरिता, प्रखर, शाबाश। चलिए 39th, who has been selected as the head of India's largest gas utility, देख सकते हो आप, गेल लिमिटेड, बाय द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। कौन है जी हेड, बताइए, गेल के हेड कौन है, कौन इलेक्ट किए गए हैं एज द हेड इन द ईयर 2022? The answer to the 39th question is, it is संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। कई बार आप जब ये ऑप्शंस देखते हो सकता है आप एकदम से इमीडिएटली क्लिक ना करें, क्वेश्चन देखते इमीडिएटली क्लिक ना करें, पर जब आप ऑप्शन देखते हो आपको देखते ही एकदम लगता है अरे सी पढ़ा आपने, और आपको लगता है अरे ये तो सी ही है आंसर। ऑप्शन देखते ही हमें लगता है अरे ये आंसर है। ये कब होता है आपके साथ? जब आपने ये इस तरह का क्वेश्चन या तो पहले करा हुआ है, या फिर आपने इस तरह की न्यूज पहले पढ़ी हुई है, या आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी आपको हेल्प करती है कि यार ये आप इनमें से ये वाला तूने पढ़ा हुआ है, ये मार्क कर दे। ये जब आप मार्क करोगे अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी के साथ जाओगे, यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट विद यू कैन से एक्यूरेसी ऑफ 100% यू विल गेट करेक्ट आंसर्स। हर बार आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, एवरी टाइम, ठीक है। तो ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस मेमोरी। आपको संदीप कुमार गुप्ता देखते ही, ऑप्शन देखते ही आपको लगेगा ये आंसर है। अगले क्वेश्चन में ट्राई करो, 40th क्वेश्चन में क्वेश्चन मत पढ़ो, सिर्फ ऑप्शंस देखो क्या आप बता पाते हो क्या व्हाट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये रहा क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शंस देखिए क्या आप बता पाते हैं क्या, ठीक है। चलिए, जी फॉर गेल सर, जी फॉर गुप्ता ये भी तरीका सही है बिल्कुल याद रखने का, वेरी गुड। Name the satellite vehicle that has been launched by ISRO, which can carry 3 satellites of Singapore. The correct answer, which will be carrying 3 satellites of Singapore. The correct answer, PSLV C53. D is the correct answer. For the 40th question, the correct answer is D. बिल्कुल सही जवाब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, सिर्फ ऑप्शंस देखे हैं सर, वेरी गुड, वेल डन, और सही जवाब दे दिया आपने। यही है खेल पूरा का पूरा। चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो कट ऑफ है
out of 40 the cutoff should be 25. Overall score 25 होना चाहिए आपका, कट ऑफ अब 25 है. अगर आप में से कोई 31st क्वेश्चन के बाद हमें ज्वाइन किया है तो 31st से 40 क्वेश्चंस का कट ऑफ था 8. सो कितने क्वेश्चंस आए आपके लिए ये बताइए. वाओ सर ये ट्रिक वर्क करी है, वेरी गुड. बिल्कुल ये करेगी दोस्तों, हर बार करेगी. ऑप्शन देखो और आपको ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाएगा. कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ गया, अरे यार इसका तो आंसर शायद नहीं पता होगा हमें. ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि कौन सा पढ़ा हुआ है हमने. सब कॉन्शियस मेमोरी हेल्प करती है. क्या बात है, सभी ने ये कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, क्या बात है. 25 इज द कट ऑफ, 30 प्लस सभी का स्कोर है, ऑलमोस्ट सभी का है. अमन बहुत खूब बेटा, वेरी गुड. 3 मार्क्स ahead of the cut off. शुभम वेरी गुड, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ गए आपके तो, वेरी गुड. गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग. चलिए वी आर ओनली हाफ वे देयर, अभी और 40 क्वेश्चंस करने बाकी हैं. तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द कट ऑफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 to 50 is 9. 9 is the cut off now. New cut off is 9. चलिए बढ़ते हैं आगे. 41st क्वेश्चन के बाद ये रहा 40th क्वेश्चन के बाद 41st. Who among the following has become the second Indian to get featured on the wall of former chief economist of IMF? हमें पता है recently Geeta Gopinath had been given a new position there at IMF. Now she is no longer the chief economist at IMF. एक नई पोजीशन इनको दे दी गई है. So Geeta Gopinath is the correct answer. This is quite easy one. सभी को पता है, सभी ने सही जवाब दिया इसका इक्का दुक्का छोड़ के. राइट, आप में से कुछ लोगों ने करंट, ठीक है, तो ये ध्यान नहीं दिया आपने. यहाँ पे क्या पूछा गया, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ऑलराइट, नए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑब्वियसली इंडिया से भी नहीं है. Who among the following has been elected as the president designate of the CII? Confederation of Indian Industry के प्रेसिडेंट कौन है? CII के आप सबको पता है, बताइए जरा क्या है सही जवाब यहाँ पे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या बात है, थैंक यू अमन. द करेक्ट आंसर फॉर द 42nd क्वेश्चन इज, it is R Dinesh. R Dinesh is the correct answer. So do remember this. R Dinesh बिल्कुल याद रखना ही रखना है. ठीक है जी. चलिए, R Dinesh है प्रेसिडेंट ऑफ द CII. CII के प्रेसिडेंट है. चलिए बढ़ते आगे. Who among the following has become the full-time Sherpa of G20 after replacing Minister of Commerce and Industry and Consumer Affairs पीयूष गोयल? तो पीयूष गोयल जी को रिप्लेस करके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि सर G20 का हमने नोट्स में पढ़ा था, बेटा वो नोट्स डायनामिक, आपको पता है नोट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं समय के साथ. तो ये भी पीयूष गोयल पहले G20 शेरपा थे. अब कौन है जी? अब है फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत. अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर. हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? अब मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है आप सबसे, बोनस क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? चेयरमैन आप सभी को पता है कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. तो नरेंद्र मोदी हैं. और यहाँ पे करंट CEO कौन है नीति आयोग के, इसका मैं इंतजार कर रहा हूं. करंट CEO कौन है दोस्तों? वेरी गुड, प्रीति कश्यप का सबसे पहले सही जवाब आया, पर वो आया गलत. ठीक है. सुमन बेरी कौन है बेटा? ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करना जरूरी है दोस्तों. द करेक्ट आंसर इज परमेश्वरन अय्यर. यस, P अय्यर इज द करेक्ट आंसर. शाबाश. अब ये पता होना चाहिए हमें. और इसके साथ ही सुमन बेरी कौन है ये भी बता दीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से हट जाए. हु इज सुमन बेरी? कौन है दोस्तों, क्या पोजीशन होल्ड करते हैं? व्हाट इज हिज पोजीशन? सुमन बेरी की क्या पोजीशन है? यस बेटा, वेरी गुड. रिया वर्मा, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा. सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन. तो ये आप याद रखिएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मोहम्मद बारकिंदो who recently passed away was सेक्रेटरी जनरल ऑफ which the following body? बताइए इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थे? प्रिया यादव बोल रहे हैं कि सर रिजवान भी गया. क्या बात है, बहुत बहुत बधाई. चलिए द करेक्ट आंसर
is बिल्कुल the correct answer is OPEC, right? OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC is the correct answer. ठीक है जी. मोहम्मद बरकिंदो, Secretary General of OPEC. OPEC is the correct answer. चलिए, let's move on to the next one. Here we go. Which company has announced the launch of Startup School India as part of its startup initiative? बताइए जरा. Startup School India कौन करेगा दोस्तों? गूगल करेगा, Amazon करेगा, फ्लिपकार्ट या फेसबुक? कि कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है. The correct answer is C. Nancy, well done. Good job, Alifia. Well done, Suraj. Alka, Ambika, well done, guys. Simrala, Shubham. Google is the correct answer. C is the right answer. चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब. Well done to all of you. शाबाश. चलिए बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सेशन जो देख रहे हैं और उन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, फटाफट से लाइक करिए. कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा. वीडियो को शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. लाइक करो यार, तभी तो मजा आएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल ऑफ इंडिया for liquefied natural gas is expected to be operational in the following state in 2022. यहाँ पे आपको पता है इसको इनॉग्रेट किसने किया था? नितिन गडकरी जी ने. गडकरी जी ने किया था. किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा सा किस रीजन से, तो देख लीजिए आप. द करेक्ट आंसर इज जयगढ़, राइट. जयगढ़ टर्मिनल में ये किया गया था. फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल महाराष्ट्र, राइट. जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र. चलिए सर, पाकिस्तान तो गियो. बिना बुमराह के ये हाल है यार इनका. बताओ यार, बुमराह होता, जडेजा होता तो क्या हो जाता है इनके साथ? बड़े वो हो जाते थे. अगर जडेजा होता तो शायद चहल खेल रहा होता टीम में, तो और इनको बैंड बजती. पूरी टीम बैलेंस ही अलग हो जाता है. खैर कोई बात नहीं. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 46th क्वेश्चन डन. Which of the following railway company will become the world's first intermodal partner of Star Alliance to make the long journey of passengers comfortable? Long journey को comfortable बनाया जाएगा. बताइए जरा, क्या है जी सही जवाब? डूशबान. डूशबान is the correct answer. जर्मनी. आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस. लॉन्ग जर्नी को कंफर्टेबल बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डूशबान. यस सर, बट अर्शदीप है ना. चलिए सही बात है, शाहीन है उनके पास. होने दो, अपने पास ही तो है. पाकिस्तान का तोड़ विराट कोहली. हर बार किसी ना किसी किसके अगेंस्ट चले ना चले, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा चलते हैं. विराट कोहली से आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों, राइट. वो क्या करते हैं, हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन जब भी होती है ना, तब वहां पे हमेशा वो निखर के आगे आते हैं. जब भी चैलेंज है, जब भी जरूरत है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, तब वो चलते हैं. ऐसे ही एक पहले के खिलाड़ी हुआ करते थे, युवराज सिंह. हमेशा प्रेशर सिचुएशन में वो चलते थे. तो कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जहां पे एकदम इजी जब ऑपोजिशन आती है तो वहां नहीं चलते, बट जब प्रेशर सिचुएशन होती है वहां पे करते हैं. उसी तरह से हम भी क्लैट का एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. इसी तरह से मॉक जब देते हैं प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो क्लास टेस्ट में शायद क्योंकि इजी है, तो क्या होता है, क्लास में हम कई बार इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, इतना अच्छा नहीं कर पाते, बट मॉक्स जब आते हैं, प्रेशर सिचुएशन आती है, तब हम निखर के सामने आते हैं. तो यही है दोस्तों, यही सीख लेनी है हमें कि प्रेशर सिचुएशन जब हो तब हमें एकदम कोहली बनना है ना. ये याद रखना है. चलिए बढ़ते हैं आगे. Shinzo Abe passed away recently. We all know that he was the pioneer behind Quad, right? Quad को प्रपोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? Shinzo Abe, right? वो उन्होंने ये बेसिकली कंसेप्ट के बारे में बातें करी थी. आप देख सकते हो. Shinzo Abe कौन सी कंट्री, ये देखिए, was a former prime minister of which of the following country? We all know the answer is Japan. काफी इजी है जी इसका आंसर. सभी लोगों ने आपने सही जवाब भी दिया है. चलिए, Japan is absolutely the correct answer. All right, let's move on to the next one. Who among the following has been appointed as the force commander of the United Nations mission in South Sudan? South Sudan में बताइए जरा क्या है जी सही जवाब. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखोगे आप तो देखोगे वहां पे सारी कंट्रीज की हालत
थोड़ी बुरी ही है, थोड़ी क्या मतलब बहुत बुरी ही है, बारिंग प्रोबेबली साउथ अफ्रीका, जो भी वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक करती है अपने आप को। तो क्या है जी सही जवाब बताइए जरा यहाँ पे। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस वगैरह हमेशा इन्वॉल्व रहती ही है पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक सर हो सकता, हाँ हो सकती है क्वेश्चन में ग्रामेटिकल मिस्टेक, बट उनको कोई बात नहीं, आप अवॉइड करके आगे बढ़ो। द करेक्ट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब प्रीति, रिया, खुशी, अंबिका, देवरिता, इंदर, श्रेया, नैंसी, शवाश, सृष्टि, वेरी गुड। चलिए जी बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन की तरफ। Who among the following ministers took charge of the Ministry of Steel after the resignation of Ramchandra Prasad Singh? Ministry of Steel, बताइए जरा कौन है जी? The answer, very good नैंची, इंदर, प्रखर, well done, सराजी पढ़ा है, very good. The correct answer ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। The people who have joined us from the beginning, the cutoff now is 34, right? 34 is the overall cutoff. देखते हैं 34 आपके आए हैं कि नहीं आए हैं, और जिन्होंने हमें 41 से 50th क्वेश्चन के बीच में ज्वाइन किया, गाइस 9 is your cutoff। चलिए 51st से 60th क्वेश्चन का cutoff this time will be 9 again, ठीक है, 9 होगा cutoff again for the 51st to 60th question। 40 आ गए, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, कट ऑफ से 3 मार्क्स आ गए, वेल डन आर्या, 11 मार्क्स आ गए, नैंची 5, 13 मार्क्स आ गए, सिमरला वेरी गुड, 14 मार्क्स आ गए, वेल डन एवरीवन, गुड जॉब गुड जॉब। सभी लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया है अभी तक, देख के बहुत खुशी हुई, वेरी गुड, वेल डन टू ऑल ऑफ यू, बहुत खूब बहुत खूब। ये नीति उल्टा क्यों लिख रहे हो यार, 50 आए 46 में से नहीं होता। हाँ ये तो राहुल गांधी जी ने एक बार ऐसा बोला था, हाँ हर 2 में से 1 बच्चा। ये तो फिर भी ठीक है। चलिए हर 2 में से 1 बच्चा या हर 1 में से 2 बच्चा, चलिए ठीक है, तो इसकी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 51st क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी हमारे सामने क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज द आंसर, क्या है जी सही जवाब। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड to set up a memorial award in public administration in the field of academic excellence in the memory of which of the following president of India? बताइए जरा, मेमोरियल अवार्ड ये सेटअप किया है इन्होंने, क्या है जी सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। चलिए यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, स्कोर वोर तो बता दो यार, बीच बीच में थोड़ा स्कोर भी बता दो। हाँ मैच तो देख ही रहे हो आप सब। क्या स्कोर हुआ है, हाँ तो इतने सारे बच्चे मैच देख रहे हैं बीच बीच में, बेटा मैच तो देख रहे हो, बस स्कोर भी नजर रखना, ज्यादा वो फोकस मत करना मैच में, है ना, ठीक है, पूरा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। चलिए ऑलराइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जल्दी से 51st क्वेश्चन डन। चलिए 52nd question, here we go. Which of the following country has signed a 5 years agreement to pay equally to the male and female cricketers at both international and domestic level? Guys, India cannot afford it. India के cricketers highest paid है, Australia cannot afford it, highest paid है, West Indies के तो पेमेंट के ही लाले हैं, तो वो क्या देंगे। The correct answer is B, न्यूजीलैंड, राइट। तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 52nd क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल सभी को हमें याद रखना ही रखना है। चांदनी पूछ रही कितने क्वेश्चन बचे सर, 80 क्वेश्चंस बेटा, इन टोटल वी हैव 80 क्वेश्चंस। आफ्टर माय सेशन एंड देयर इज अ सेशन ऑन लीगल एज वेल, तो वो भी आप बिल्कुल देखते रहिएगा। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल लंबा वीडियो है, आपके लिए लगातार चलता ही रहेगा। ऑलराइट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53rd, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज? इंडियन यूनिवर्सिटीज बताइए जरा, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर सुरंजन दास, सुरंजन दास इज द करेक्ट आंसर for the 53rd question। चलिए 32 for 2 sir, 6 overs, अच्छा तो कम ही है।
53rd क्वेश्चन डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सर डिनर भी नहीं की हूँ, भूख लगी है बट नहीं खाऊंगी. डिनर नहीं करा अभी तक, बोलो लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया. डिनर तो कल रात को किया ना. चलिए अच्छा है, दिन में डिनर करना भी नहीं चाहिए. Which of the following state will launch the first of its kind in India right to health bill? अब ये स्टेट है, ये मैंने बताया था आपको अपना एग्जांपल देके, यहाँ पे राजस्थान का. Right, the correct answer, very easy. Previous marathon we have discussed this. Rajasthan is the correct answer. Rajasthan is the right answer here. बिल्कुल याद रखना ही रखना है. शाबाश, बहुत खूब मित्रों, वेल डन. हाँ लंच मिस कर दिया आपने. हाँ मैंने भी मिस किया हुआ यार, मैंने भी नहीं खाया. इस सेशन के बाद एक और सेशन लगा हुआ है, उसके बाद एक और सेशन है, फिर एक और सेशन है, फिर एक और सेशन है, फिर एक और सेशन है. ठीक है, तो चलता है, ये सब चलता रहता है. ठीक है, तो आप भी खाते रहिए बीच बीच में, जब भी टाइम मिले हम भी खाते रहेंगे बीच बीच में. चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 55. Which state government has launched a single use plastic buyback scheme to inculcate a habit? अब दोस्तों ये प्लास्टिक बायबैक कौन करेगा? वो स्टेट जहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, जहां पे फर्क पड़ेगा इफ देयर इज टू मच प्लास्टिक ऑन द रोड्स एटसेट्रा, जहां पे उनके टूरिज्म को अफेक्ट पड़ेगा, वही तो कंट्री है, वही तो स्टेट है जिसको फर्क पड़ेगा, जो ऐसी स्कीम करेगा कि प्लास्टिक को हम वापस से खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, आपको पैसा देगी. द आंसर इज yes, it is Himachal Pradesh. D is the correct answer. Well done, Nancy, Alifia, Adit, Riya, Arya, Asmita, Khushi, Indar, Shreya, Preeti. बहुत बढ़िया. देवारिता, रिया, शुभम, वेरी गुड. नीति, आशी, रिया, सिमरेला, शुभम, बहुत खूब. यस, कल भी क्लास में डिस्कस किया था ये, बिल्कुल सही कहा आपने. चलिए बढ़ते आगे. Which state's forest authority experimenting with an automatic siren system on National Highway 55 to alert drivers about movement of elephants that will reduce human elephant encounters? आपको लग रहा होगा सर ऐसा भी होता है? हाँ जी, नेशनल हाईवे 55 पे अक्सर एलिफेंट्स का आना जाना लगा रहता है. तो आपको लग रहा है सर मजा आ जाएगा सर, ऐसे फ्री में ऐसे एलिफेंट देखने को मिल जाएगा. ऐसे नहीं, बहुत रिस्की भी होता है. सोचिए आप चल रहे हैं रोड पे, अचानक से आ जाए एलिफेंट. यहाँ टैंक है वो चलता फिरता, आप भिड़ेंगे उससे, क्या हो जाएगा. अभी आपको पता होगा एक रिसेंटली वीडियो भी वायरल हुआ था where someone was 4 individuals who were sitting in a BMW और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रहे थे. BMW नई खरीदी थी उन्होंने और भगा रहे थे उसको, लखनऊ जा रहे थे बिहार से, और स्पीड थी उनकी 230 की स्पीड से जा रहे थे. और एक ट्रैक्टर जो है वो उल्टा, मतलब एक्सप्रेस वे में भी देखो दोस्तों कई बार इस तरह की चीजें भी हो जाती है. तो कोई ट्रैक्टर जो है वो उल्टी गलत लेन में वो आ रहा था और उस वजह से क्या हुआ, टक्कर हुई, और टक्कर होने की वजह से चारों लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट दे डाइड. तो दोस्तों ये सब चीजें भी होती है, एक्सप्रेस वे पे भी ये सब चीजें हो सकती है. तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा. कभी भी आप अगर सीटेड हैं, कभी गाड़ी में बैठे भी हैं, चाहे आप खुद गाड़ी ना चला रहे हो, तो कभी भी किसी को ओवर स्पीड ना करने दें. चाहे एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, आपकी गलती नहीं है. वो बोले कि मैंने तो जिंदगी भर चलाई है. अरे जिंदगी भर चलाई है, एक गलती आपकी नहीं किसी और की, उसी वजह से भी लाई जा सकती है. साइनस मिस्त्री के साथ क्या हुआ हमने देखा. तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनका एक्सीडेंट बिल्कुल कितना भी कैसा भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता, मतलब बड़ी गाड़ी जिनका ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है कि सेफ्टी मेजर्स कितने ज्यादा लेते हैं, वहां वो गाड़ी भी सेफ नहीं है, तो हम समझ ही सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा जी 57th. Huge reserves of uranium have been found at Rohil in which state of India? What is the answer to this one? बताइए जरा, क्या है जी जवाब? What is the answer to this one? The correct answer फिर से राजस्थान. नहीं, थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम तेज कर दो यार दोस्तों, मेरी तो आवाज हमेशा जितनी है. ठीक है, आपकी वॉल्यूम जो है शायद धीरे हो गई होगी, तो फटाफट से उसको तेज कर दीजिए. ठीक है, एकदम आपको क्लियरली आएगी. So correct answer for the 57th question is yes, it is राजस्थान. राजस्थान is the correct answer. कई लोगों ने गलत भी दिया इसका जवाब,
तो याद रखिएगा झारखंड नहीं है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये रहा आपके सामने। Which institution has launched a portal named परीक्षा संगम? परीक्षा संगम बताइए क्या है जी सही जवाब? परीक्षा संगम किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है पोर्टल परीक्षा संगम? द आंसर CBSE. CBSE has actually launched परीक्षा संगम। परीक्षा संगम लॉन्च किया है उन्होंने, तो ये आप याद रखिएगा, CBSE is the correct answer। ठीक है, लॉन्च्ड पोर्टल नेम परीक्षा संगम। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप में से किसी ने मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया, आप कर सकते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सेस ऑफ 45 प्लस मॉक टेस्ट। Alright, Rafael Nadal have won 22 Grand Slam titles. We all are aware. उसमें से 14 फ्रेंच ओपन चलिए उसमें से कितने फ्रेंच ओपन टाइटल्स है? तो उसमें है जी 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। फ्लो में निकल गया। चलिए आप लोगों के लिए तो बेनिफिट हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। सो 14 इज द राइट आंसर। शाबाश अस्मिता, सूरज, रिया, सभी को पता था ये। वेल डन अंबिका, नैंसी, आर्या, वेल डन, गुड जॉब त्रिशिर। चलो शाबाश, डी इज द करेक्ट आंसर। 14 Who has been appointed as the UNSC, United Nations Security General's envoy on technology? This is an Indian envoy on technology. G से गिल याद आ रहा है क्या? कुछ हमने इस तरह की बात करी गई है पहले। याद आया किसी को टेक्नोलॉजी गिल? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर अमनदीप सिंह गिल। द करेक्ट आंसर बीइंग A. Now 60 questions done. The cutoff now is 43 out of 60 the cutoff is. People who have joined us from 51 to 60, the cutoff for you guys is 9. Very good, याद आया गिल है ना। चलिए शाबाश, बहुत खूब, वेरी गुड रिया, way ahead of the cutoff. Simrela, continue this. Arya, well done buddy, very good. Nancy, Srashti, well done, 58 is a fab score. Neeti, good job, well done. Riya, very good, well done. Kushi, Alifia, Devarita, Shubham, Inder, well done. चलिए वेरी गुड प्रखर, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा स्कोर है जी आप सभी का। वेल डन टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 61 से 70 का कट ऑफ है 10। अब मैं भी थोड़ा टफ कट ऑफ दूंगा आपको भाई। कट ऑफ 10 है अब से, तो ये याद रखिएगा, दिस इज योर न्यू कट ऑफ। चलिए लेट्स सी कितने लोग ये कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। थक चुका हूं सर, बट आज पूरी मैराथन लूंगा। वेरी गुड, क्या बात है श्रेया, वेल डन। प्रीति, गुड जॉब। ओके, 61st क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने। ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो यार, एक आध मिनट का, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, शॉर्ट ब्रेक। आज अगर थोड़ा सा पानी वानी पीना चाहते हैं पी सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए, सब बोल रहे हैं अहमदाबाद। आप सब जब अहमदाबाद बोल रहे हो तो मैं क्यों कुछ और बोलूं? बिल्कुल सही, वेरी गुड शुभम, वेल डन। खुशी, अंबिका, यस द करेक्ट आंसर इज ए, Ahmedabad is absolutely the correct answer. Shabash Alifia, well done. InSpace, PM Modi inaugurated the headquarters of InSpace at Ahmedabad. बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों एक मैं आपको क्विक 1 मिनट ब्रेक देता हूँ। 62nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बट आई विल वेट फॉर अ मिनट। अभी राइट नाउ इट इज 2:14। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट पूरा दे रहा हूँ आपको। जाओ, जो भी फ्रेश होना चाहते हो, थोड़ा सा मुंह धो के आना चाहते हो धो के आ जाइए, पानी पी के आना चाहते हो पानी पी के आ जाइए, फटाफट से क्विकली गो एंड कम बैक। ठीक है, मीनवाइल people who are already here, you can keep answering. चलिए, the correct answer, very good, सभी लोग कह रहे हैं जी चाइना है सही जवाब। बिल्कुल सही दोस्तों, चाइना बिल्कुल सही जवाब है भी। अब यहाँ पे जब हम चाइना कह रहे हैं, चाइना हैज रिलीज्ड अ डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। अब इन्होंने ये जो डिटेल्ड मैप जो निकाला है मून का,
चाइना ने। ये कैसे निकाला? ये फार साइड ऑफ द मून, ये एक्चुअली दे वर सक्सेसफुली एबल टू लैंड, ठीक है, तो वहां पे सक्सेसफुली वो लैंड कर चुके थे। इस वजह से इंडिया ने भी कोशिश की थी, बट चंद्रयान मिशन हमारा वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था। सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, हम हार्ड लैंडिंग करी। हार्ड लैंडिंग मतलब एकदम धीरे से जमीन टच होनी चाहिए थी, बट हम तेजी से टच किया, जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल बिगड़ गया हमारा। चलिए, डन है। हमारे दोस्त सारे गए हैं 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ सारे आ गए। सर ठीक है, स्टार्ट रखिए, ब्रेक का लेना। वेरी गुड सर, मसूद भी आउट हो गया। चलिए, ये रेंची तो मैच देख के रहेगी। ऑलराइट गाइस, सो चलिए, ब्रेक कंप्लीट हो चुका है, आई एम श्योर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, छोटे से ब्रेक है, लेट्स मूव ऑन। नेम द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हु हैज won the Norway Chess Group A ओपन चेस टूर्नामेंट। बताइए जरा, क्या है जी आंसर? इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है ये जिन्होंने जीता है? This is the individual who successfully defeated Magnus Carlsen, the world number 1, the world champion. Answer is R. Pragnand. R. Pragnand is the correct answer. So well done to all of you. Well done, guys. ये सभी ने सही जवाब दिया, मैं जान के बहुत खुश हूँ। Very good, Priya, Niti, Ashi, Preeti, Inder, Neha, Asmita. Well done. Manpreet Kaur, associated with which sport, sets a new national record in the interstate athletic meet in Chennai? इन पे काफी डोपिंग को लेकर भी कुछ आरोप लगे थे। The answer is yes, it is C, shot put. Shot put is the correct answer. Do remember shot put? मैंने भी दोस्तों खेला हुआ है शॉट पुट, स्कूल में जब हम थे तब खेला था। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरा थ्रो बहुत अच्छा था, तो वो देखकर हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उन्होंने पीई टीचर, वो उन्होंने हमें बोला था कि भाई आप जो है फेंको, ये शॉट पुट फेंक सकते हो आप। पर उनको भी टेक्निक नहीं आती थी, मेरे को भी टेक्निक नहीं आती थी, तो खड़े खड़े फेंका करते थे। उस खड़े खड़े में भी मैं जो स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो था उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मिल गया था। उसके बाद आगे भी जाने का था, पर गए नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं था और टेक्निक भी नहीं आती थी। बट अगर आती तो ये भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है ना। उस टाइम पे ये बात है, ये जब मैं 12th में था, तो बहुत साल हुए अब तो। चलिए खैर, ऑलराइट, सो शॉट पुट इज द करेक्ट आंसर। शॉट पुट में पूरा प्रॉपर मूवमेंट लेकर यू हैव टू यूज एवरी आउंस ऑफ योर एनर्जी। मोमेंटम बनाना होता है उस सर्कल के अंदर ही आपको, और उस मोमेंटम को आप यूज करके फेंक सकते हो बहुत दूर। चलिए खैर, ये है आपके सामने, बट आपको हमें जीके और सीए पढ़ाना था, इसलिए चाहिए। चलिए, नेम द 94-year-old sprinter who has clinched the gold medal in the 100-meter sprint at the World Masters Athletic Championship in Finland। बताइए जरा, कौन है जी ये? कौन है? आप सब कह रहे हो जी भगवानी देवी दगर है जी, बिल्कुल सही। आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। आर्या भी खेल चुके हैं शॉटपुट, क्या बात है, वेरी गुड आर्या। बहुत, आपने आंसर भी सही दिया आर्या, ये डबल बोनांजा। Well done, good job everyone. D is absolutely the correct answer, so well done, शाबाश। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ये बताइए जी, ऑलराउंडर है ये, प्लेयर ऑफ द मंथ रही है, ऑलराउंडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बताइए, पता है ना सबको इनके बारे में? मैंने बोल दिया ऑलराउंडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चलिए खैर, चलिए एक और क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप सबसे। सिकंदर राजा अभी रिसेंटली ये भी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, ये कौन सी कंट्री के हैं? बताइए। सिकंदर राजा ये भी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे रिसेंटली, कौन सी कंट्री के हैं सिकंदर राजा? व्हाट इज द आंसर? सिकंदर राजा कौन सी कंट्री से हैं ये? ये साउथ अफ्रीका से नहीं है सिकंदर रजा, नहीं, पाकिस्तान में पैदा हुए थे ये, बट ये खेलते क्रिकेट किसके लिए हैं? कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? नहीं, बांग्लादेश भी गलत बता रहे हो आप सब। वेरी गुड सृष्टि, यस द आंसर इज जिम्बाब्वे के क्रिकेटर है ये, ठीक है, याद रखना।
सर फिर ऐसी कौन सी सीआर ले जिसमें सेफ रहे, एक्सीडेंट के बाद BMW फेल रेंज रोवर ठीक ठाक होगी सर। सीआर, अच्छा कार, वॉल्वो, ठीक है। वॉल्वो जो कार है दोस्तों, पिछले 10 साल में ऐसा कहा जाता है कि वॉल्वो की कार में कोई भी डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो वॉल्वो जो है वो काफी मेहनत करती है अपनी कार को सेफ बनाने में, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करती है। सेफेस्ट कार अगर वर्ल्ड में कोई है तो वो वॉल्वो ही है, ठीक है। वॉल्वो की कार्स जो है काफी सेफ होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, आपने पूछा है तो मैंने बताया, ठीक है। मैं कोई वॉल्वो का वो नहीं हुआ स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। चलिए, which of the following state is set to invest rupees 300 crore in early childhood education program? early childhood education program में कौन सा स्टेट है बताइए जरा यहाँ पे। What is the answer? 67th question. The correct answer, Meghalaya. Meghalaya is set to invest 300 crore rupees in early education program. बिल्कुल सही, रिया ने आंसर तो सही दिया बट क्वेश्चन मार्क के साथ दिया। Good job, Nancy Trisher. Yes, Meghalaya is the correct answer. Arshi, Alifia, Srashti, Devarita, well done. Chaliye, good job, Preeti, Neeti, Asmita, Khushi, Shubham, Shreya, everyone. Well done. Simrela, Prakhar, Arya, Ambika, Devarita, Riya, well done. बताइए, which of the following company has unveiled India's first indigenously developed a lithium-ion cell? 68th question in front of you. What is the correct answer? बताइए जरा, क्या है जी सही जवाब? रिया ने बोला है हीरो मोटोकॉर्प। लिथियम आयन सेल दोस्तों, ये ओला इलेक्ट्रिक, बिल्कुल ये पता होना चाहिए हमें। ओला इलेक्ट्रिक is the correct answer here. D is the correct answer. Good job, Arya, Trishir, everyone. Devarita, Shreya, Ashi, Priya, Ambika, Preeti. Ola electric is the correct answer. चलिए जी, so D is the right answer. Moving on to the next one. Name the Indian shooter who has won the men's 10-meter air rifle gold medal at the International Shooting World Cup in South Africa. South Africa में जो हुआ वर्ल्ड कप शूटिंग का, उसमें मेंस 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल कौन जीत के आया? अर्जुन बबूता, पार्थ मखीजा, सौरभ चौधरी या दिव्यांश सिंह पवार? The answer is अर्जुन बबूता। अपन को याद होगा, हमने ये ऑप्शन आपको याद कराने के लिए हमने बबूता जी काफी हमने मेहनत की थी, तो ये आई एम श्योर आपको रिकॉल वैल्यू जनरेट करा होगा। द आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, बबूता जी याद रखना है हम सबको। Prime Minister has unveiled the 6.5 meter tall national emblem on top of the new triangular parliament building, which was created by whom? किसने बनाया जी नेशनल एम्बलम? ये देखिए, ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग आप सभी को पता है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है फर्स्ट फेज का चल रहा है। द आंसर, अरे बेटा व्यास जी का नाम भूल रहे हो आप, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत बोलो। The correct answer is Vyas ji along with Sunil Devda. बिल्कुल, so Lakshman Vyas and Sunil Devda, right? ये याद रखना है आपको, ठीक है। D is the correct answer, ठीक है। लक्ष्मण व्यास जी भी याद रखना है आपका ना, लक्ष्मण रेखा याद रखो। चलिए, so 70 questions done, guys. The cutoff earlier after 60 questions was 44. Now the cutoff is 54 out of 70. Total after 70, the cutoff is 54. The cutoff for the set 61 to 70 was actually 10, and the cutoff for the next set of questions is again 10, right? So that means 71 से 80th question जो होगा उसका cutoff जो है वो again that will be 10. Overall cutoff will be 64. People who score more than 64 out of 80 will actually be considered as विनर्स, ठीक है। आप डेफिनेटली विनर कहलाए जाओगे। बहुत खुशी का अनुभव है मुझे ऑलरेडी ये बोलते हुए कि कई सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी 64 से ज्यादा नंबर ला चुके हैं। ऑलरेडी 64 से ज्यादा नंबर कई सारे बच्चे ला चुके हैं, कई सारे आई एम श्योर इस सेट में लेकर आ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द 71st क्वेश्चन।
Narayanan Kumar, who has received the Order of the Rising Sun Gold and Silver Star Award from the government of Japan, is a vice chairperson of which organization? ये बताइए दोस्तों, what is the answer here? क्या है जवाब यहाँ पे? $71st क्वेश्चन. सूरज बोल रहे हैं बी, अलका ने भी बोला बी, नैन जी ने भी बोला बी, और बी बिल्कुल सही है, सनमार्ग ग्रुप. अगेन गाइस, जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस. अगर आपने क्वेश्चन पहले कभी भी किया होगा, अगर आपने कभी भी सनमार्ग ग्रुप हाथ से लिखा होगा, आपको अपने आप ही आपको दिमाग में वो जो पॉइंट है वो ट्रिगर करेगा, आपको अचानक से वो स्ट्राइक करेगा कि इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों बी है. सनमार्ग ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. ये आपको याद रखना है. चलिए, all right, let's move on to the next one. 72nd. Who among the following has bagged Mrs. Universe Divine Crown in South Korea in the year 2022? यहाँ पे Mrs. Universe की बात हो रही है. Mrs. Universe, तो ये obviously it's an Indian. So the answer, सूरज ने बिल्कुल सही बोला, नैन्सी ने भी, पल्लवी सिंह. पल्लवी सिंह is the correct answer. Mrs. Universe Divine Crown, South Africa, Pallavi Singh. Pallavi Singh is the correct answer. चलिए, 72nd question done. The correct answer is D. बढ़ते आगे 73rd क्वेश्चन की तरफ. Who among the following has clinched the title of F1 Austrian Grand Prix 2022? अब दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड प्री क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हम इनको फॉलो ज्यादातर करते हैं नहीं. राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज चार्ल्स लेसरैट. अब ये अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं हमसे, क्या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्या? द आंसर इज नो. बट क्या पूछ सकते हैं क्या? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. सो पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं गया है इसको, है ना. अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट एग्जाम्स की, सीयूईटी की, तो वहां पे डेफिनेटली पूछ सकते हैं. अदरवाइज क्राइस्ट और ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम में पूछ सकते हैं. बाकी एलेट और क्लैट में यूजुअली F1 के क्वेश्चंस नहीं पूछते बिकॉज इंडियन पार्टिसिपेशन वहां होता नहीं है. All right, बढ़ते आगे. Which of the following state has ranked first in the Delta ranking of June 2022 under the Shyam Prasad Mukherjee, ये देख सकते हो आप, अर्बन मिशन, रर्बन मिशन. सो रूरल एंड अर्बन मिशन को मिलाकर बताइए जरा, रर्बन मिशन. The answer, फर्स्ट रैंक डेल्टा रैंकिंग ऑफ जून 2022, ये देख सकते हो आप, फर्स्ट रैंक बिलोंग टू झारखंड. गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया. आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो. वेरी गुड. बी, रिया बहुत सही, त्रिशिर, वैजा, नैन्सी, अंबिका, नीति बहुत खूब, शुभम. चलिए, प्रिया, खुशी, सिमरला, श्रेया बहुत बढ़िया. Novak Djokovic won his 7th Wimbledon Grand Slam after defeating whom? Now this person is actually an Australian, बहुत अच्छे एथलीट है, बहुत बढ़िया जो है टेनिस खेलते भी हैं ये, तो ये आपको याद रखना है. क्या है जी सही जवाब यहाँ पे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए, द करेक्ट आंसर निक किर्गियोस, ऑस्ट्रेलिया के ये एथलीट हैं. आप सभी को इनके बारे में पता होगा, राइट. ऑस्ट्रेलिया के ये एथलीट है, नाम है इनका निक किर्गियोस, राइट. चलिए, डन है दोस्तों. चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये रहा आपके सामने. क्विकली आंसर बताइए जरा, आंसर कीजिए और बताइए.
India becomes the 68th country to join Interpol's International Child Sexual Exploitation Database. Which of the following organization is the nodal agency for Interpol? Interpol. The correct answer CBI बोल रहे हो सारे के सारे. क्या बात है भाई, सभी लोग बहुत बहुत बधाई आपको. Very well done. Good job. The correct answer is C. Absolutely right. चलिए. Done है दोस्तों. CBI is absolutely the correct answer. Very good job. Well done. शाबाश. All right. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. CBI आप लोगों ने दिया भाई, मैं भी हैरान हूं. तो दोस्तों लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू गो. ठीक है जी, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू गो गाइस. चलिए. Which of the following edition of the national games will be organized by गुजरात फ्रॉम 27 सितंबर? ये बताइए जरा कौन सा एडिशन है दोस्तों ये नेशनल गेम्स का. व्हाट इज द आंसर? सी बोल रहे हो, 36 बोल रहे हो. बिल्कुल सही कहा आपने, 36 एडिशन है ये. बिल्कुल याद रखना ही रखना है. चलिए डन है दोस्तों. 36 इज द करेक्ट आंसर. शाबाश प्रखर प्रिया, क्या बात है यार. 37 गोवा में होगा, ये भी पता होना चाहिए. बिल्कुल सही कहा आपने. वेरी गुड देवरिता. 78th ये रहा आपके सामने. Which of the following aerospace company has signed an agreement with Hindustan Aeronautic Limited to create a new joint venture intended to develop helicopter engines? What is the correct answer? बताइए जरा. न्यू जॉइंट वेंचर इंटेंडेड टू डेवलप हेलीकॉप्टर इंजन. द करेक्ट आंसर इज, ये देख सकते हो आप, डी. वेरी गुड त्रिशिर, अलका, वेलजान, अचल. वेरी गुड बडी, गुड जॉब. रिया, आर्या. क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया भाई? द करेक्ट आंसर बीइंग डी. वेरी गुड नीति, अंबिका, खुशी, अस्मिता, नैंसी. वेल डन टू ऑल ऑफ यू. शाबाश. चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा जी. चाइना हैज किक्ड ऑफ द सी गार्डियंस टू drill exercise with which of the following country at the Shanghai coast? What is the correct answer? China has kicked off the sea guardians to drill exercise with which of the following country at the Shanghai coast? The correct answer 79th क्वेश्चन का ए भी आया मेरे पास, डी भी आया है. द करेक्ट आंसर इज बी. अब ये देखिए आप, बी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. चाइना ने ये करी है पाकिस्तान के साथ, राइट. सो पाकिस्तान इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. देखिए दोस्तों गलत हो गया काफी लोगों का. देवरिता, रिया ने सही जवाब दिया है. कई लोग जो है गलत जवाब दे चुके हैं. चलिए ध्यान रखना है आपको. बेटा आप तो कमाल कर रहे हो. ताइवान कैसे लिख सकते हो यार? हाउ कैन यू राइट ताइवान? ताइवान के साथ एक्सरसाइज करेंगे ये चाइना. ये रिलेशन आपको, चाइना ताइवान की रिलेशन नहीं पता अभी आपको? हमने रिसेंटली वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज वेल. अभी हमने पहले के सेशन में भी ये डिस्कस किया हुआ है ग्रेट डिटेल में. ये गलती कैसे कर सकते हो दोस्तों आप लोग? यार ऐसे मत करो यार. देखो तो सही दोनों की किस कंट्री की किसके साथ मित्रता है नहीं है, ये तो सब ध्यान रखिए आप. चलिए okay, the next question, here we go. In which constitutional amendment act seats of Lok Sabha were increased from 525 to 545? आप सबको पता है the Central Vista project जो चल रहा है उसमें number of seats are to be significantly increased. बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको. तो उसी वजह से जगह तो हो बैठने की सबके पास, तो इस वजह से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई जा रही है और सब कुछ चीजें चल रही है. तो पिछला जो इंक्रीज किया गया 525 से 545, बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था ये? द आंसर इज डी, राइट. 1973 इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी डन है दोस्तों. अब शेयर कीजिए जी दोस्तों अपना स्कोर. जैसा मैंने आपको बताया था 64 इज द कट ऑफ आफ्टर
80 क्वेश्चंस। बताइए क्या रहा आपका ओवरऑल स्कोर? चलिए, सभी का स्कोर आ रहा है मेरे पास और गजब का स्कोर आ रहा है, ये भी देख रहा हूं मैं। चलिए, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले स्कोर शेयर किया है जी रिया ने, रिया वर्मा विद स्कोर ऑफ 77। वेल डन, गुड जॉब, बहुत आगे। 72 आर्या, वेरी गुड, वेल डन। 68 नैन्सी, क्या बात है। प्रीति 66, अलीफिया विद स्कोर ऑफ 65, गजब लीप ली अलीफिया आपने। सिमरेला 78, वेल डन। सृष्टि ऑल्सो 78, क्या बात है। देवारिता 73, नीति 78, क्या बात है, वेरी गुड। शुभम 75, रिया 71, वेल डन। 75, ठीक है, गुड जॉब शुभम। 74 खुशी, हरिओम 0 आया आपके, अभी ज्वाइन किया है क्या? अश्मिता 71, 62 प्रखर, 71 रिया, 1 आए आपके, लेट आए, ओके। 68 श्रेया, 74 अंबिका, इंदर 74, वेल डन गाइस, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। दोस्तों इसी के साथ अभी अब आपका जो है शुरू होगा जी अगला सेशन, जहां पे आपको जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यू आर द मोस्ट लव टीचर फॉर मी, द बेस्ट टीचर। अरे बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है सूरज ठीक है, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद यू बडी। दोस्तों इसी के साथ फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर। जाने से पहले अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो भाई पहले लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है जी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो जी, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू लाइक टू आस्क मी, फील फ्री टू शेयर, राइट। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आप सभी को। चलिए जी, कोई सवाल कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो मुझसे, दिस इज द टाइम। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर मी, फील फ्री। गाइज मैं देख रहा हूं काफी थकावट हो चुकी है आप सभी को, यू गाइज आर अ लिटिल टायर्ड आई एम श्योर। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, वी विल गिव यू अ 10 मिनट ब्रेक, एक 10 मिनट का आपको एक ब्रेक दे देते हैं। सो ब्रेक टिल प्रोबेबली, अभी आपका 2:40 हो रहा है यहाँ पे, तो 2:50 तक आपको एक ब्रेक दे देते हैं हम, ठीक है जी। टिल 2:50 PM देयर इज अ ब्रेक, द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन। हैप्पी दिवाली गाइस, हैव अ सेफ दिवाली। मिलते हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट बहुत जल्दी होगा बेटा, नेक्स्ट मेंटी सेशन भी, नेक्स्ट मैराथन भी बहुत जल्दी होंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल रियल सून। बता दिया जाएगा आजाद, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप मिस आउट ना करें। अगर कभी भी कोई भी डिटेल आती है विद रिस्पेक्ट टू एनी न्यू सेशन एटसेट्रा, वो सब आपके साथ वहां पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।
Can you all see me? Am I visible? Not audible. I am visible. You can see me. What? Really? In this black and white monochrome, you can see me. Isn't this nice? Something really unique. Good afternoon, guys. How are you all? Can you all hear me and see me? Am I audible and visible at the same time? Isn't this a nice filter? Like, I look like Ashy with orange mouth. This is fun. Once in a fire. Yeah. All okay? Great. That's amazing. That's amazing. Okay, so without wasting much time, let us begin. Okay. Now, this is the last session of the hackathon. Okay, and I wanted to include a few static questions as well, but then I thought यार त्योहार का टाइम है अभी बच्चों को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं अगली मैराथन पे ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे so we're going to do only 3 passages, right? Let us start. I look like a foreigner. In general also I look like that. No, I don't. I look pretty Indian. Yeah, it's monochrome. It's monochrome. It's a good filter. But I'll think about it. Everyone read it? मैंने पढ़ लिया. I'm reading the passages with you. Done? Good. So before we move over to the next slide, you should know that there's a test series. If you haven't subscribed to the test series, you have to, you need to. It's very important first. It's at a very reasonable price second. And considering the fact that your exam is right here, it becomes an inherent part of your preparation. So do subscribe it, okay? Moving on, yeah. It's not an easy passage. You have to be extra focused on it. All India mock, everybody, after you're done with your Deepavali and everything, I would request you to take the mock. You know everything about it. आपको पता है कि इसका result क्या होने वाला है? The toppers batch that I announced in my class. You will be given an actual experience of your exam. You'd be competing with thousands of aspirants. This is something that you need to take seriously. और बिल्कुल last day का इंतजार नहीं करना है यार ये तो बहुत दूर है दिल्ली 31st को आराम से बैठ के कायदे से दूंगा नहीं पहले देना है और अच्छे से देना है ठीक है और हाफ बेक्ड हाफ हार्टेड मॉक नहीं अटेम्प्ट करना है यू हैव टू take the complete mock. You cannot take it half. Okay, you have to sit for 2 hours and you have to take it for 2 hours properly like an actual exam. Okay, now I'm done. It won't happen again.
Can you also hear it? So as you can see that it's basically a critical analysis of the misuse of death penalty. Author is really not in favor of death penalty, and that is what he has commented upon. Right, so this is basically something or an extract given by Justice K.T. Thomas on his article or book, Why Bachchan Singh Needs to Be Revisited. Okay, yes. Everyone done? Does anybody want to read any slide or passage again? Once I am on the questions, I won't going back. Done completely? Okay, question number 1. The constitutionality of the death penalty has been recently challenged by advocate Wills Matthew before the Supreme Court of India. Mr. Harshil Mehta, Solicitor General of India, argues before a 5-judge bench that the death penalty is constitutional for the Constitution itself makes reference to the form of punishment. You are the judge. What would you decide? I would accept the argument for the intention of the makers of the Constitution is well reflected in the references to the death penalty in the Constitution. I would not accept the argument for the constitutionality of the death penalty has to be tested only for violation of fundamental rights under Article 13. Okay, no. Next options. I would accept the argument for the death penalty must be constitutional for it serves justice to the perpetrators of brutal crimes. I would not accept the argument for death penalties against public policy. What do you think? Is it related to First Amendment? Not at all. Read the passage once. Okay, let's see if the Constitution really provides for death penalty. So this is the first slide. Indian Article 72 allowed President Governor to show clemency and convict sentence to death. 134 provided for appeal to Supreme Court if High Court awarded a convict death penalty after reversing High Trial Court judgment. We shall not overlook the reality that the Constitution makers could not be expected to go into various aspects of each punishment provided in the penal statutes. When they shaped Article 13 of the Constitution, it declared that any law in force at the time when the Constitution came into effect, which was violative of any of the fundamental rights in the Constitution, is void. Okay, so instead of going into every punishment and every complication of whatever statute it was, they incorporated Article 13 so that it could be examined on the parameters of civil freedoms, right? During the first 5 years, death penalty remained a normal punishment for murder. After an amendment was done in 1973, the Parliament directed that if a sessions judge is giving death penalty, he has to show reasons. Previously, before 1973, he has to show reasons as to why is he not giving death penalty. It was a normal thing. It was a normal, ordinary punishment for any murder. But after 1973, he had to justify why is he killing. Oh, sorry, why is he executing or giving a death order? Right? This change was made evidently to give a message that normal punishment cannot be death. It has to be
another punishment. Then the situation was changed subsequently, not because of any legislative exercise, but because of Bachchan Singh. Bachchan Singh was given death penalty. Okay, first Bachchan Singh was given life imprisonment. He came out of the life imprisonment and he killed yet another 3-4 people. And then he was given the death penalty. And his death penalty was challenged because he challenged it on several grounds. And that case, Supreme Court came out with a doctrine called rarest of the rare doctrine. So if a crime is of the nature or is the circumstances suggest something which is unprecedented, has not happened before, or is really unusual, they can take an unusual route and give an extraordinary punishment to the extraordinary criminal. Thereafter, that became the law as binding on all courts in India because of Article 141. Because according to 141, whatever Supreme Court has given out as a judgment becomes a law for the entire country, right? However, this drastic curtailment of power to impose capital punishment remained only in paper. Judges, especially sessions court judges, use death penalty as a very normal course of punishment, even when it gets dismissed. Now, would you accept the argument now? It is constitutional, as the constitution makes reference for the punishment. Is it buffering? Not buffering. Now tell me the answer. What do you think the answer is? B is correct. You were right. B is absolutely correct. So everyone who was uh, saying B as the correct answer, you're right. B is correct. C is not correct. The argument of the constitutionality of death penalty cannot be just given. It has to qualify the parameter or the qualifications given under Article 13, or it has to be tested against Article 13. Then it will be proved whether or not it is constitutional. Not before. You can say, sir, it is constitutional because constitution is making a reference for it. No, constitution is not making a reference for it. It has to be tested against Article 13, and then the constitutionality would come into being. Got it? Yes. Now, it is the year 1951. Arjun Reddy has been convicted for murder of Kabir Singh, a farmer who had his agricultural land adjacent to Reddy's. It is found that Reddy and the deceased got into a dispute regarding the deceased farmer's encroachment of Reddy's land. A disagreement turned into a quarrel, and enraged Reddy hit Singh on his head with an iron rod. Reddy's lord pleaded provocation and prayed before the judge to reduce Reddy's sentence. Judge should sentence Reddy to life imprisonment, which is ordinarily given for murder. Judge should sentence Reddy to death, which is ordinarily awarded for murder. Should consider provocation as a special reason to not award Reddy the death sentence. Should consider provocation as a special reason and sentence Reddy to death. Okay, these are same. Okay, not same. Remember what is given in the passage. Now tell me the answer. It's very easy if you think about it. Well, B is correct. It is the first slide that says during the first 5 years, ordinarily the punishment that was given for murder was death. And the sessions court or the trial judge had to furnish reasons if he was giving any other punishment. Now we are talking about the year 1951. When did the constitution came into force? 1950. So what would be the punishment in that era? It would be death penalty. And the answer is B. Okay, so there are certain things that you have to focus while reading the passage, guys. If the passage is mentioning a particular time and a question relates to that particular time, you have to follow the law that existed at that time, not the current law. Right? The current law has changed. Death is no longer an ordinary punishment. It is given in the rarest situations, not just like that. But before
1973, or especially during the first 5 years, it was death penalty here and there everywhere. It was as if they were trying to control the population or something. Actually, they were trying to bring law and order. Okay, right after British left, the law and order suddenly completely collapsed, because the people who were not slaves exactly, but people who were ruled and regulated, or basically controlled or treated as inferior by a foreign power. Everybody was a foreign power. Of the rulers of the Sultanate period did not belong to India. The rulers of the Mughals did not belong to India. After Mughals came British, who also did not belong to India. So if you think about it, starting from the year 1206, during which the Sultanate began, it is the year when Sultanate began, 1206, and we got independent in 1947. Calculate the number of centuries. That's the era, or that's the duration for which India was ruled constantly. Suddenly there's no ruler, you are independent, you have all these rights, civil freedoms, etc. You'll absolutely become, crazy. And that is why the judiciary was stricter originally. Okay. Now, please refer to the above mentioned facts. In 1977, Kabir Singh's son, Musaddilal, in order to take revenge for his father's death, killed Arjun Reddy's son, Prabhas. Do you see the name of the characters that I've given? Arjun Reddy, Kabir Singh, Musaddilal, and Prabhas. 1,000 years, exactly. It's almost 1,000 years. A millennium. We were ruled for a millennium, right? Yeah. Okay. Where were we? Huh. So 1977. There are no circumstances that may warrant for special reasons to be assigned by the judge. Now tell me. Seriously? See? Thrasher? Come on. Guys, it's B. It's 1977. Do you remember what happened after 1973? Life imprisonment became an ordinary punishment for murder. Right? Life imprisonment became an ordinary punishment for murder, and death was no longer an ordinary punishment. And if you were, in fact, uh, executing a death warrant, you had to furnish reasons. For any other punishment, no special reasons were to be assigned, but for death, special reasons were to be given. B is the correct answer. You're a little confused, aren't you? Now, Ashfaq jumped to hit Mustaq on his head with an iron rod. To the nimble Mustaq, who happened to Naruto fan and always wanted to train to be a ninja, dodged and threw a sickle that he was carrying, and Ashfaq died. Mushtaq is now convicted for murder. His counsel pleads that Mushtaq acted in self-defense, which is accepted by the judge as a special reason to reduce his sentence. Now tell me. It is a very simple, straightforward question with a straightforward answer. And I'm not sure why you are getting confused. His counsel pleads that Mushtaq acted in self-defense. It is given that the judge has accepted self-defense as a special reason to reduce his sentence. Now, section 100 is not getting
fulfilled, right? Section 100 is not getting fulfilled. So basically, if section 100 is not really getting fulfilled, it will not apply. The judge has agreed to give a reduced sentence because he really did act in self-defense. Now, what do you think the answer would be? It will be B. Now, the punishment that goes for murder is 10 years or life imprisonment or death. It can be less than 10 years also. It doesn't have to be minimum 10 years for murder. The general punishment that is given for murder is not for a cold-blooded murder or for any other situation is 7 years. Now, this is what you require to understand a little idea about criminal law. B is right if you know a little bit about sentencing in criminal law. Right? Moving on. Next passage. That was a little too complicated. I accept. This will be easy. 14 years is the usual course actually. According to section 57, 20 years means life imprisonment. Okay. Life imprisonment is equivalent to 20 years. But that 20 years is the maximum given. So up to 20 years can be given as life imprisonment. So anything above 10 and up to 20 is life imprisonment. More than 10 but less than 20 is life imprisonment according to section 57. So they land in between. They balance out and they give 14 years as life imprisonment. That is what the practice is. But the after Nirbhaya, after the acid case, after gang rape, children gang rape, etc., the amendment has been done, and finally, life imprisonment also means remainder of a person's life. Done? Great. Simple passage. Hmm. Now, R went on a holiday to Goa beach. He decided to experience a water sport known as scuba diving. Though all the precautions were taken, there arose some problem and R started drowning in the middle of the sea. A lifeguard B saw the whole thing but kept still and did not do anything.
Is there any tort committed by anyone? Trishir is the first to answer. Then I have Arya, Althea says it's B. There's no tort whatsoever. Okay. Okay, so most of you have answered C. I'll also tell you one thing. See, omission to do a duty, no? If there is a legal duty imposed on you, right? If you don't do it properly, if you violate it, you are legally liable. You have breached your duty. But if you omit to do your duty, like if you don't do it at all, then also you have violated your duty. C is correct. By not doing his legal duty towards what he is assigned for or to what he is assigned for, he has committed a tort. He was supposed to make sure that nobody drowns, and he sat still, didn't do anything. He is liable. Right? Crust Municipal Corporation maintains a public park. One day a child R was playing in the park. Suddenly she encountered a tree and plucked a flower from the same. As soon as she brought the flower close to her nose and to obtain its fragrance, her nose started bleeding and she died as a consequence. Consequently, it was revealed that the flower was poisonous. R's parents accused the municipal corporation for tortious liability. Is their accusation valid? Everybody says C. D also seems correct, doesn't it? It's C. There is a legal obligation to maintain the park. In that regard or in that light, they should either remove everything poisonous or put a fence around it so that nobody goes near it, or put a warning sign near such plants and shrubs or trees that people are aware that there are poisonous plants and shrubs also in the park. D doesn't match with the principle. Yes. So D is something that you are assuming. Okay, D is more like an assumption. C is exactly related to your passage. Failed to perform their legal duty. That's why the accusation is invalid. Why do you think the tree and flower should not be there in the first place? No, it is an assumption. Even if it is there, it can be fenced. There can be a warning. Right? People can be cautious about going near it or sending their children near it. C is correct. Got it? Everyone? The fact that the poisonous tree is there is not the violation. That's not the crux. Okay, if in case you're confused, पार्क में जहरीला पेड़ है या जहरीला फूल है ये नहीं दिक्कत है. दिक्कत ये है कि लोगों को उसके बारे में नहीं पता है. पार्क अगर है और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है आपकी, तो मेक श्योर कि जो भी डेंजरस फेटल चीज है जो हो सकती है भाई, फोना में बहुत कुछ ऐसा है जो कि कंजम्पशन के लिए, फ्रैग्रेंस के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बहुत पॉइजनस होता है, उससे दवाइयां बनाई जाती हैं, सब कुछ है, वो अपने आप भी ग्रो कर जाता है. तो अगर वो है तो उसके आसपास फेंसिंग करो, लोगों को बताओ ये पॉइजनस है, इससे दूर रहो. राइट? सी इज करेक्ट. Adam was a registered voter in his constituency. On the day of election, he was on his way to cast the vote for his desired candidate. He was stopped by a police inspector, B, due to which he was not able to cast his vote.
Although Adam's desired candidate won, he filed a suit against B. Is the claim valid? Is the claim valid? Yep, the claim is valid, definitely. The legal right of Adam is violated. End of story. Whether he is a police officer or not, but even if he's a police officer, he has no right to violate somebody's legal right provided he has an authority to do so. And the question does not mention authority or sanction anywhere. So we cannot just assume that just because he's a public official, he can stop anywhere, anyone, anywhere he wants. No, he cannot do it. Right? So B is the correct answer. A runs a school in Sector 25, Noida for the past 30 years. There are almost 40,000 students in the school. B has recently returned from London, opened school adjacent to A. Facilities, amenities, B school are much better than A school. A, as a consequence of this, almost 15,000 students have left A school and joined B school, due to which A's turnover has decreased tremendously. A has sued B for unduly influencing students to leave his school and also demanded that B school be shut as two schools are not required in the same area. Is A's contention valid? It's very easy. The Gloucester Grammar School copied. It's C, yes. I don't even want to go into it. To constitute a tort, what do you need? There need not be an act or omission. The act should cause monetary damage or loss. The act should be done in a public place or none. Shubham says it's B 100%. Arya, Inder, Riya, Nancy, Avi, Shreya, Shrishti, Bhumika. ये बच्चे क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे रहे हैं. इनमें से किस चीज की जरूरत है टॉर्ट कमिट करने के लिए? किसी भी चीज की नहीं है यार. There has to be an act or an omission, वरना लीगल ड्यूटी वायलेट कैसे होगी? There's either an act or an omission that violates the legal duty. The act should cause monetary. Am I visible? I am right. Properly. Am I audible to you? Audible also? No problem. Shubham, read option A properly, like Arya has told you. पढ़ो एक बार ऑप्शन ए, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्यों नहीं है. यप. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. वो नोट नहीं पढ़ रहा था.
He was not reading not. I guess you also figured it out, right, guys? ऐसा हो जाता है, बच्चे ऐसा कर देते हैं. मैंने कई बार किया है ऐसा, despite the fact that I do these passages on a daily basis. Done? Done? Done, everyone? लंबा है ये. Pioneer is a person who's really got good at what they do. Or generally the first person who meanings have changed. Right. X was a hard-working engineer who often worked overtime without pay in order to complete the work that was assigned to him. However, despite his hard work, he was fired from his job. Taking this in stride, X opened a shop selling cell phones instead.
However, the shop was not performing well financially. In order to lure customers, X put up a billboard advertising that he sells our phone 10 at 80% discount. Why a customer entered the store after reading the billboard and came to know that X was not selling the phone at any discount. He only wanted the customers to visit the store. Y filed a consumer complaint against X for fake advertising in the district forum. Will he succeed? There's only one option that says yes, Y will succeed. The others say will not succeed, will not succeed. This is very apparent that Y is correct. Obviously, he is misleading his customers. He is fake advertising. He will be liable. It's given right in the passage. A is absolutely right. Right? Yeah. What? It's not an offense? Did I miss something in the passage? It's wrong. The answer given here is wrong. It's given right here. That's what I got confused. So, mistreatment and misleading ads are considered as unethical trade practices, duplicacy, products, illiteracy, ignorance of part of the customers. Certain laws and regulations, of course. It's A. It's A. Believe me. Okay, this is wrong. Oh, sorry. I did miss something. And why did we miss it exactly? In order to protect consumer forum? Fine. Oh my God. It's D because why must report to offences of Advertising Standard Council of India to seek redressal. It is not given in the passage. The question is wrong. The information is not given in the question. The information on which they're basing Y as the correct answer is not given in the passage itself. So he succeeds to district or consumer complaint against fake advertising in the district forum. According to the information that the passage assumes us to have, is that when you face situation like this, you go to the Advertising Standard Council of India, not proper passage. Information incomplete. I am rejecting it. Okay. Yeah, don't worry. ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक आध बार कहीं भी होना तो नहीं चाहिए, but what can you do, अब हो गया तो. Okay, तो Zata is a big clothing brand in the country. They've started advertising their new fashion lines on billboards. Misrepresentation is not an offense, but you can complain. Okay, but where you can complain, that information is not given in the passage. बड़ी simple सी बात है. पैसेज में ये इस तरह की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है अगर आप क्वेश्चन उस तरह का फॉर्म कर रहे हो तो. बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है. I'll take care next time. Zara is a big clothing brand in the country. They started advertising their new fashion lines on billboards, radio and television in order to ensure that the information about their product is properly disseminated. The clothing was advertised as tear-free under normal conditions. Sahana bought the clothes after hearing about the product through a friendly and a voluntarily cut them just to test tear-free feature of the clothing and see if it passes the test. The clothes immediately tore. Sahana sues Zara for false advertising. Will she succeed? Exactly. Voluntarily, if you tear something, obviously it'll tear.
in the normal circumstances it won't tear, it the fabric won't unravel just like that. But if you intentionally, unravel it, it will come out. It's just a fabric, not vibranium. Right? C is absolutely right. Very good. Thanos Private Limited is a company that manufactures and sells printers. The company recently launched a new laser printer and advertised it by claiming that the printer can print up to 30,000 pages without refilling the cartridge. After watching the ad, it's up to, I guess, up to. Okay, so something that. After watching the ad for the printer on television, Nidhi became interested in the product and purchased it. However, she received a defective product and she had to refill the cartridge after printing 200 pages. She filed a suit against Thanos Private Limited for false advertising. Will she succeed? She has sued for false advertising. Isko padho. Just be limited to this. She has sued for false advertising. That's it. She has not put any other claim. The question is not asking you if any other claim can be sustained. The question is only asking you that she has instituted a suit for false advertising. Will this false advertising suit be successful? This is the question. D is not right. This is not correct. This is right. No. Defective product cannot be attributed to false advertising. Guys, you need to understand कि question आपसे पूछना क्या चाह रहा है. What exactly? You cannot be adventurous. You cannot assume things. What you are answering is not exactly wrong. Right? It's not exactly wrong. But it does not fit. It does not fit. Question पूछ रहा है कि भाई वो succeed उस थैनोस लायबल है या नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि उसका सूट सही है या नहीं. अगर क्वेश्चन होता इज विल थैनोस बी लायबल फॉर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, तो आप सी सेलेक्ट करते कि नो, थैनोस विल बी लायबल बट इट विल नॉट बी लायबल फॉर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, देन सी इज करेक्ट. The question wants to know is the suit of false advertising reasonable or right in the present situation? It is not. It is not. बात सजेशन की नहीं है, बात है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझने की. ठीक है, क्वेश्चन फैक्ट्स तो दे ही दिए तुम्हें, फैक्ट्स तुमने पढ़ भी लिए, फैक्ट्स तुमने समझ भी लिए, पैसेज को भी तुमने समझ लिया, लेकिन फैक्ट के बाद एक्चुअल क्वेश्चन भी आएगा ना, उस एक्चुअल क्वेश्चन को भी पढ़ के समझना है कि भाई वो पूछना क्या चाहता है. फैक्ट्स अलग, क्वेश्चन अलग, वो सॉरी फैक्ट्स अलग, पैसेज अलग, सब अलग, इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, बट व्हाट डज द क्वेश्चन वांट्स टू नो फ्रॉम यू एग्जैक्टली. राइट? ये गलत है, आंसर डी सही नहीं है. जो मैंने कहा है वो सही है. उफ़ो, ये होता है बिना उसके. Anyhow, Suresh and Ramesh are best friends who are both freelance graphic designers. They consider themselves as the best in their field of work and decide to take up graphic designing for large multinational corporations. Ramesh and Suresh. नहीं श्रेया, everybody you stick to the answers that you think are correct. जैसे कल भी मैं जब questions करवा रही थी तो there were very few students who answered correctly, who actually read it. For example, the word commercial use or commercial sacrifice, most of the students missed it, but some caught it, or despite the mass answer, they decided to give their own answer.
stand out. Okay. Suresh and Ramesh, best friends, decide to work for a large multinational, advertise themselves on the internet and many other national newspapers as graphic designers with a specialization in graphic designing from a want to write Florida, but whatever. DC, Florida, DC, wow. Florida, DC. After viewing their advertisements, a lot of companies approached them for their work and paid huge advances. Ramesh and Suresh accepted many job offers, submitted their work to the companies. After submission, the company realized that both of them possessed no skill and they have lied about their qualification. One of the client companies sued Ramesh and Suresh for false advertising under Consumer Protection Act 1986. Done. मुझे ही देर लग गई पढ़ने में. Okay. Yes, since Ramesh and Suresh are fraudsters, the company will succeed in their claim. No cannot be implicated under Consumer Protection Act 1986 because they are not manufacturers or service providers. No falsifying or and misleading the consumers is not explicitly mentioned offense under Consumer Protection Act 1986. The companies came to Ramesh and Suresh at their own will, hence they cannot later sue them for the work done. आंसर क्या दे रखा है इसमें? Misleading advertise ad unfair trade practices is, as mentioned in the above passage, is not considered an offense because it has not been explicitly mentioned. हटाओ इसको. इस पैसेज में गड़बड़ है. क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन पैसेज में दे ही नहीं रखी है. The passage is not made wholesome. I don't approve of such questions at all. Should never be there. So let's move on. A is not correct, but neither of the option is correct. They do not justify the passage. Yeah, actually, I want to change the passage. This is the last question, and we're done. That's all that we are going to do. It's festival time, guys. You should enjoy a little bit. Will he succeed? Are you sure? Very good. If you have not read the passage properly, they seem more appropriate. अगर पैसेज को ठीक से नहीं पढ़ा है तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, है ना? लेकिन अगर पैसेज को ठीक से पढ़ लिया है तो ए सही आंसर है. Very good. A is absolutely correct. Most of you were right. Yes, you got confused, but you chose right. You were the first to answer. Passage is confusing. There is a lot of information that should have been there, but it is not there, and questions are curated of that. Sometimes it happens, when there is a pressure to create a lot of questions, legal भी, current भी, logical भी, तो एक आध बार गलती हो जाती है. It's after all human beings preparing, right? तो कोई बात नहीं. So that's all for today, guys. That's all that we are going to do. I want you to enjoy your festivities, indulge in whatever is happening at your place, and I would also do the same. So everybody take care. I shall see you again on Wednesday. खूब
त्योहार मनाएं, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए, सेफ रहिए, शोर शराबा ज्यादा मत करिए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा मत करिए, और हम वेडनेसडे को मिलेंगे। तब तक आप अपनी दिवाली को एंजॉय करिए। एवरीबडी टेक केयर, बी सेफ, ईट हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू रीड करंट अफेयर्स इवन ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस, बाकी भले ही कुछ मत करना। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।